ठीक नहीं है। नो राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा होगी। 9 तरीका। Honorable Speaker, I present the budget for 25-26. This budget continues our government's efforts to A. Accelerate growth, B. Secure inclusive development, C. Invigorate private sector investments, D. Uplift household sentiments, and E. Enhance spending power of India's rising middle class. Together, we embark on a journey to unlock our nation's tremendous potential for greater prosperity and global positioning under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. As we complete the first quarter of the 21st century, continuing geopolitical headwinds suggest lower global economic growth over the medium term. However, our aspiration for a Vikasit Bharat inspires us, and the transformative work we have done during our government's first 2 terms guides us to march forward resolutely. Our economy is the fastest growing among all major economies. Our development track record for the past 10 years and structural reforms have drawn global attention. Confidence in India's capability and potential has only grown in this period. We see the next 5 years as a unique opportunity to realize Sabka Vikas, stimulating balanced growth of all regions. The great Telugu poet and playwright Gurujada Apparao had said, "Deshamante matti kadoy, deshamante manushuloy," meaning a country is not just its soil, a country is its people. In line with this, for us, Vikasit Bharat encompasses zero poverty, 100% quality good school education, access to high quality, affordable and comprehensive health care, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, and farmers making our country the food basket of the world. In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas focusing on Garib, youth, Annadata and Nari, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy and innovation, securing energy supplies, promoting exports and nurturing innovation. For this journey of development, our 4 powerful engines are agriculture, MSME, investments and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Vikasit Bharat. This budget aims to initiate transformative reforms across 6 domains. During the first 5 years, these will augment our growth potential and global competitiveness. The domains are taxation, power sector, urban development, mining, financial sector, and regulatory reforms. Agriculture as the first engine. Now I move to specific proposals, beginning with agriculture as the first engine. Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri-districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity,
moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. Building rural prosperity and resilience. A comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. The details are in Annexure A. Domestic best practices will be incorporated, and appropriate technical and financial assistance will be sought from multilateral development banks. In phase 1, 100 developing agri-districts will be covered. Atmanirbharta in pulses. Our government is implementing the National Mission for Edible Oilseed for achieving Atmanirbharta in edible oils. Our farmers have the capability to grow enough for our needs and more. 10 years ago, we made concerted efforts and succeeded in achieving near self-sufficiency in pulses. Farmers responded to the need by increasing the cultivated area by 50%, and government arranged for procurement and remunerative prices. Since then, with rising incomes and better affordability, our consumption of pulses has increased significantly. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on Tur, Urad and Masoor. Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. Comprehensive program for vegetables and fruits. It is encouraging that our people are increasingly becoming aware of their nutritional needs. It is a sign of a society becoming healthier. With rising income levels, the consumption of vegetables, fruits, and Shri Anna is increasing significantly. A comprehensive program to promote production, efficient supplies, processing, and remunerative prices for farmers will be launched in partnership with the states. Appropriate institutional mechanisms for implementation and participation of farmer producer organizations and cooperatives will be set up. Makhana board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of Makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to Makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. A national mission on high-yielding seeds will be launched, aimed at 1. Strengthening research ecosystem, 2. Targeted development and propagation of seeds with high yield, pest resistance, and climate resilience, and 3. Commercial availability of more than 100 seed varieties released since July 2024.
India ranks second largest globally in fish production and aquaculture. Seafood exports are valued at 60,000 crore rupees. To unlock the untapped potential of the marine sector, our government will bring in an enabling framework for sustainable harnessing of fisheries from Indian exclusive economic zone and high seas, with a special focus on the Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands. For the benefit of lakhs of cotton growing farmers, I am pleased to announce a mission for cotton productivity. This 5-year mission will facilitate significant improvements in productivity and sustainability of cotton farming and promote extra long staple cotton varieties. The best of science and technology support will be provided to farmers. Aligned with our integrated 5F vision for the textile sector, this will help in increasing incomes of the farmers and ensure a steady supply of quality cotton for rejuvenating India's traditional textile sector. Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. For Atmanirbharta in urea production, our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. India Post, with 1.5 lakh rural post offices, complemented by the India Post Payment Bank and a vast network of 2.4 lakh Dak Sevaks, will be repositioned to act as a catalyst for the rural economy. Details are at Annexure C. India Post will also be transformed as a large public logistics organization. This will meet the rising needs of Vishwakarmas, new entrepreneurs, women, self-help groups, MSMEs, and the large business organizations. Our government will provide support to NCDC for its lending operations for the cooperative sector. MSMEs as the second engine. Now I move to MSMEs as the second engine, which encompasses manufacturing and services with a focus on MSMEs numbering 5.7 crores. Currently, over 1 crore registered MSMEs, employing 7.5 crore people and generating 36% of our manufacturing, have come together to position India as a global manufacturing hub. With their quality products, these MSMEs are responsible for 45% of our exports. To help them achieve higher efficiencies of scale, technological upgradation, and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. The details are given in Annexure D. To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat.
and for well-run exporter MSMEs for term loans up to 20 crore rupees. Also for the micro enterprises, we will introduce customized credit cards with a 5 lakh rupee limit for micro enterprises registered on Udyam portal. In the first year, 10 lakh such cards will be issued. Fund of funds for startups. The alternate investment fund, AIFs, for startups have received commitments of more than 91,000 crores rupees. These are supported by the fund of funds set up with the Government of India's contribution of 10,000 crore rupees. Now, a new fund of funds with expanded scope and a fresh contribution of another 10,000 crore rupees will be set up. A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme. Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. Measures for labor-intensive sectors. To promote employment and entrepreneurship opportunities in labor-intensive sectors, our government will undertake specific policy and facilitation measures. To enhance the productivity, quality, and competitiveness of India's footwear and leather sector, a focused product scheme will be implemented. The scheme will support design capacity, component manufacturing, and machinery required for production of non-leather quality footwear, besides the support for leather footwear and products. The scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh persons, generate over 4 lakh crore rupees, and exports of over 1.1 lakh crore rupees. Measures for the toys sector. Building on the National Action Plan for Toys, we will implement a scheme to make India a global hub for toys. The scheme will focus on development of clusters, skills, and a manufacturing ecosystem that will create high-quality, unique, innovative, and sustainable toys that will represent the Made in India brand. Support for food processing. In line with our commitment towards Purvodaya, we will establish a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management in Bihar. The institute will provide a strong fillip to food processing activities in the entire eastern region. This will result in 1. Enhanced income for the farmers through value addition to their produce, and 2. Skilling entrepreneurship and employment opportunities for the youth. Manufacturing mission, furthering Make in India. Our government will set up a national manufacturing mission covering small, medium, and large industries for furthering Make in India by providing policy support, execution roadmaps, governance, and monitoring framework for central ministries and states. Details are in Annexure E. Given our commitment to climate-friendly development, the mission will also support clean tech manufacturing. This will aim to improve domestic value addition and build our ecosystem for solar PV cells, EV batteries, motors and controllers, electrolyzers, wind turbines, very high voltage transmission equipment, and grid scale batteries. Investment as the third engine. Now I move to investment as the third engine, which encompasses investing in people, investing in the economy, and investing in innovation.
Investing in people. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 program provides nutritional support to more than 8 crore children, 1 crore pregnant women and lactating mothers all over the country, and about 20 lakh adolescent girls in aspirational districts and the Northeast region. The cost norms for these nutritional support will be enhanced appropriately. Atal Tinkering Labs. 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. Broadband connectivity to government secondary schools and PHCs. Broadband connectivity will be provided to all government secondary schools and primary health centers in rural areas under the BharatNet project. Bharatiya Bhasha Pustak Scheme. We propose to implement a Bharatiya Bhasha Pustak scheme to provide digital form Indian language books for schools and for higher education. This aims to help students understand their subjects better and in their language. National Centers of Excellence for Skilling. Building on the initiative announced in the July 24 budget, 5 national centers of excellence for skilling will be set up with global expertise and partnerships to equip our youth with the skills required for Make for India, Make for the World manufacturing. The partnership will cover curriculum design, training of trainers, and a skills certification framework and periodic reviews. Expansion of capacity in IITs. Total number of students in 23 IITs has increased 100% from 65,000 to 1.35 lakh in the past 10 years. Additional infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. Hostel and other infrastructure capacity at IIT Patna will also be expanded. Center of Excellence. Center of Excellence in AI for Education. I had announced 3 centers of excellence in artificial intelligence for agriculture, health, and sustainable cities in 2023. Now a center of excellence in artificial intelligence for education will be set up with a total outlay of 500 crores. Expansion of medical education. Our government has added almost 1.1 lakh undergraduate and postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. Daycare cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. Strengthening urban livelihoods. Our government has been giving priority to assisting urban poor and vulnerable groups. A scheme for socio-economic upliftment of urban workers will be implemented to help them improve their incomes, have sustainable livelihoods, and a better quality of life.
PM Swanidhi scheme has benefited more than 68 lakh street vendors, giving them respite from high-interest informal sector loans. Building on this success, the scheme will be revamped with enhanced loans from banks, UPI-linked credit cards with 30,000 rupees limit, and capacity building support. Social Security scheme for welfare of online platform workers. Gig workers of online platforms provide great dynamism to the new age services economy. Recognizing their contribution, our government will arrange for their identity cards and registration on the e-Shram portal. They will be provided health care under PM Jan Arogya Yojana. This measure is likely to assist nearly 1 crore gig workers. Investing in the economy. Public-private partnership in infrastructure. Each infrastructure-related ministry will come up with a 3-year pipeline of projects that can be implemented in PPP mode. States will also be encouraged to do so and can seek support from the India Infrastructure Project Development Fund, which is a scheme to prepare PPP proposals. Support to states for infrastructure. An outlay of 1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest-free loans to states for capital expenditure and incentives for reforms. Building on the success of the first asset monetization plan announced in 2021, the second plan for 2025 to 30 will be launched to plow back capital of 10 lakh crore in new projects. Regulatory and fiscal measures will be fine-tuned to support the plan. Jal Jeevan Mission. Since 2019, 15 crore households representing 80% of India's rural population have been provided access to portable tap water connections. To achieve 100% coverage, I am pleased to announce the extension of this mission until 2028 with an enhanced total outlay. The mission's focus will be on the quality of infrastructure and O&M of rural piped water supply schemes through Jan Bhagidari. A separate MOU or separate MOUs will be signed with the states and union territories to ensure sustainability and citizen-centric water services delivery. Urban sector reforms. Building on the July budget proposals, urban sector reforms related to governance, municipal services, urban land and planning will be incentivized. Urban Challenge Fund. The government will set up an urban challenge fund of 1 lakh crore rupees to implement the proposals for cities as growth hubs, creative redevelopment of cities, and for water and sanitation purposes announced in the July budget. This fund will finance up to 25% of the cost of bankable projects, with a stipulation that at least 50% of the cost is funded from bonds, bank loans, and PPPs. An allocation of 10,000 crore is proposed in 2025-26. Power sector reforms. We will incentivize electricity distribution reforms and augmentation of intra-state transmission capacity by states. This will improve financial health and capacity of electricity companies. Additional borrowing of 0.5% of GSDP will be allowed to states contingent on these reforms. Nuclear energy mission for Vikasit Bharat. Development of at least 100 gigawatt of nuclear energy by 2047 is essential for our energy transition efforts.
for an active partnership with the private sector towards this goal. Amendments to the Atomic Energy Act and the Civil Liability for Nuclear Damage Act will be taken up. A nuclear energy mission for research and development of small modular reactors with an outlay of 20,000 crore will be set up. At least 5 indigenously developed small modular reactors will be operationalized by 2033. Shipbuilding. The shipbuilding financial assistance policy will be revamped to address cost disadvantages. This will also include credit notes for shipbreaking in Indian yards to promote the circular economy. Large ships above a specified size will be included in the infrastructure harmonized master list. Shipbuilding clusters will be facilitated to increase the range, categories, and capacity of ships. This will include additional infrastructure, facilities, skilling, and technology to develop the entire ecosystem. Maritime Development Fund. For long-term financing for the maritime industry, a Maritime Development Fund with a corpus of 25,000 crore rupees will be set up. This will be for distributed support and promoting competition. This will have up to 49% contribution by the government, and the balance will be mobilized from ports and from private sector. UDAN regional connectivity schemes. UDAN has enabled 1.5 crore middle-class people to meet their aspirations for speedier travel. The scheme has connected 88 ports, airports, and operationalized 619 routes. Inspired by that success, a modified UDAN scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years. 4 crore additional passengers in the next 10 years. The scheme will also support helipads and smaller airports in hilly, aspirational, and northeast regional districts. Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. Western Kosi Canal project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. Mining sector reforms. Mining sector reforms, including those for minor minerals, will be encouraged through sharing of best practices and institutions of a state mining index. A policy for recovery of critical minerals from tailings will be brought out. Under the special window for affordable and mid-income housing, SWAMI, 50,000 dwelling units in stressed housing projects have been completed and keys handed over to home buyers. Another 40,000 units will be completed in 2025, further helping middle-class families who were paying EMIs on loans taken for apartments while also paying rent for their current dwellings. Building on this success, SWAMI Fund 2 will be established as a blended finance facility with contribution from the government, banks
and private investors. This fund of 15,000 crore rupees will aim for expeditious completion of another 1 lakh units. PM Gati Shakti data for private sector. For furthering PPPs and assisting the private sector in project planning, access to relevant data and maps from the PM Gati Shakti portal will be provided. Tourism for employment-led growth. Top 50 tourist destination sites in the country will be developed in partnership with states through a challenge mode. Land for building key infrastructure will have to be provided by the states. Hotels in these destinations will be included in the infrastructure harmonized list. The following measures will be taken for facilitating employment-led growth. Organizing intensive skill development programs for our youth, including in institutes of hospitality management. Providing mudra loans for homestays. Improving ease of travel and connectivity to tourist destinations. Providing performance-linked incentives to states for effective destination management, including tourist amenities, cleanliness, and marketing efforts, and introducing streamlined e-visa facilities along with visa fee waivers for certain tourist groups. Continuing with the emphasis on places of spiritual and religious significance in the July budget, there will be a special focus on destinations related to the life and times of Lord Buddha. Medical tourism and heal in India. Medical tourism and heal in India will be promoted in partnership with the private sector along with capacity building and easier visa norms. Investing in innovation. To implement private sector-driven research, development, and innovation initiatives announced in the July budget, I am now allocating 20,000 crore rupees for this purpose. A deep tech fund of funds will also be explored to catalyze the next generation startups as a part of this initiative. In the next 5 years, under the PM Research Fellowship Scheme, we will provide 10,000 fellowships for technological research in IITs and IISc with enhanced financial support. The second gene bank with 10 lakh germplasm lines will be set up for future food and nutritional security. This will provide conservation support to both public and private sectors for genetic resources. We will start a national geospatial mission to develop foundational geospatial infrastructure and data. Using PM Gati Shakti, this mission will facilitate modernization of land records, urban planning, and design of infrastructure projects. A Gyan Bharatam mission for survey, documentation, and conservation of our manuscript heritage with academic institutions, museums, libraries, and private collectors will be undertaken to cover more than 1 crore manuscripts. We will set up a national digital repository of Indian knowledge systems for knowledge sharing. Now I move to exports as the fourth engine. We will set up an export promotion mission with sectoral and ministerial targets driven jointly by the Ministries of Commerce, MSME, and Finance. It will facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets. A digital public infrastructure, Bharat Trade Net, for international trade will be set up as a unified platform for trade documentation and financing solutions.
This will complement the Unified Logistics Interface Platform. The BTN will be aligned with international practices. Support will be provided to develop domestic manufacturing capacities for our economy's integration with global supply chains. Sectors will be identified based on objective criteria. Facilitation groups with participation of senior officers and industry representatives will be formed for select products and supply chains. Through this, there are huge opportunities related to Industry 4.0, which needs high skills and talent. Our youth have both. Our government will support the domestic electronic equipment industry to leverage this opportunity for the benefit of our youth. A national framework will be formulated as guidance to states for promoting global capability centers in emerging Tier 2 cities. This will suggest measures for enhancing availability of talent and infrastructure, building bylaw reforms, and mechanisms for collaboration with industry. Our government will facilitate upgradation of infrastructure and warehousing for air cargo, including high-value perishable horticultural produce. Cargo screening and customs protocol will be streamlined and made user-friendly. Reforms as the fuel. Over the past 10 years, our government has implemented several reforms for convenience of taxpayers, such as faceless assessment, 2, taxpayer charter, 3, faster returns, 4, almost 99% returns being on self-assessment, and 5, Vivad Se Vishwas scheme. Continuing these efforts, I reaffirm the commitment of the tax department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week. I will detail the indirect tax reforms and changes in direct taxes in Part B. Financial sector reforms. The FDI limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100%. This enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India. The current guardrails and conditionalities associated with foreign investment will be reviewed and simplified. The services of India Post Payment Bank will be deepened and expanded in rural areas. NABFID will set up a partial credit enhancement facility for corporate bonds for infrastructure. Public sector banks will develop Grameen Credit Score framework to serve the credit needs of SHG members and people in rural areas. A forum for regulatory coordination and development of pension products will be set up. To implement the earlier announcement on simplifying the KYC processes, the revamped Central KYC Registry will be rolled out in 2025. We will also implement a streamlined system for periodic updating. Requirements and procedures for speedy approval of company mergers will be rationalized. The scope for fast-track mergers will also be widened and the process made simpler. As proposed in the interim budget, we signed bilateral investment treaties with 2 countries in 2024 to encourage sustained foreign investment, and in the spirit of First Develop India, the current model BIT will be revamped and made more investor-friendly. In the last 10 years, in several aspects, including financial and non-financial, our government has demonstrated a steadfast commitment to ease of doing business.
We are determined to ensure that our regulations must keep up with technological innovations and global policy developments. A light touch regulatory framework based on principles and trust will unleash productivity and employment. Through this framework, we will update regulations that were made under old laws. To develop this modern, flexible, people-friendly, and trust-based regulatory framework appropriate for the 21st century, I propose 4 specific measures. A high-level committee for regulatory reforms will be set up for a review of all non-financial sector regulations, certifications, licenses, and permissions. The committee will be expected to make recommendations within a year. The objective is to strengthen trust-based economic governance and take transformational measures to enhance ease of doing business, especially in matters of inspection and compliances. States will be encouraged to join in this endeavor. An investment friendliness index of states will be launched in 2025 to further the spirit of competitive, cooperative federalism. Under the Financial Stability and Development Council, a mechanism will be set up to evaluate impact of the current financial regulations and subsidiary instructions. It will also formulate a framework to enhance their responsiveness and development of the financial sector. In the Jan Vishwas Act 2023, more than 180 legal provisions were decriminalized. Our government will now bring up the Jan Vishwas Bill 2.0 to decriminalize more than 100 provisions in various laws. I now move to fiscal policy. In the July budget, I had committed to staying the course for fiscal consolidation. Our endeavor will be to keep the fiscal deficit each year such that central government debt remains on a declining path as a percentage of the GDP. The roadmap for the next 6 years has been detailed in the FRBM statement. Revised estimates for 2024-25. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 31.47 lakh crore rupees, of which the net tax receipts are 25.57 lakh crore rupees. The revised estimate of the total expenditure is 47.16 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 10.18 lakh crore rupees. The revised estimate of the fiscal deficit is 4.8% of the GDP. Budget estimates for 25-26. Coming to 25-26, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 34.96 lakh crore rupees and 50.65 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 28.37 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated to be 4.4% of GDP. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.54 lakh crore. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 14.82 lakh crore rupees. I will now move to Part B. Indirect taxes. My proposals relating to customs aim to rationalize tariff structure and address duty inversion. These will also support domestic manufacturing and value addition, promote exports, facilitate trade, and provide relief to common people. Rationalization of customs tariff structure for industrial goods. As a part of comprehensive review of customs rate structure announced in July 2024 budget, I propose to 1.
remove 7 tariff rates. This is over and above the 7 tariff rates removed in 23-24 budget. After this, there will be only 8 remaining tariff rates, including 0 rate. 2. Apply appropriate cess to broadly maintain effective duty incidence, except on a few items where such incidence will reduce marginally. 3. Levy not more than 1 cess or surcharge. Therefore, I propose to exempt social welfare surcharge on 82 tariff lines that are subject to a cess. I shall now take up sector-specific proposals. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. Specified drugs and medicines under patient assistance programs run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD, provided the medicines are supplied free of cost to the patients. I propose to add 37 more medicines along with 13 new patient assistance programs. Support to domestic manufacturing and value addition. Critical minerals. In the July 2024 budget, I had fully exempted BCD on 25 critical minerals that are not domestically available. I had also reduced BCD of 2 other such minerals to provide a major fillip to their processing, especially by MSMEs. Now, I propose to fully exempt cobalt powder and waste, the scrap of lithium-ion battery, lead, zinc, and 12 more critical minerals. This will help secure their availability for manufacturing in India and promote more jobs for our youth. To promote domestic production of technical textile products such as agro-textiles, medical textiles, and geotextiles at competitive prices, I propose to add 2 more types of shuttle-less looms to the list of fully exempted textile machinery. I also propose to revise the BCD rate on knitted fabrics covered by 9 tariff lines from 10 or 20 to 20% or 115 rupees per kg, whichever is higher. Electronic goods. In line with our Make in India policy and to rectify inverted duty structure, I propose to increase the BCD on interactive flat panel display from 10% to 20% and reduce the BCD to 5% on open cell and other components. In 23-24 budget, for the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, I had reduced the BCD on parts of open cells from 5% to 2.5%. To further boost the manufacture of such open cells, the BCD on these parts will now stand exempted. Lithium-ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium-ion batteries, both for mobile phones and for electric vehicles. Shipping sector. Considering that shipbuilding has a long gestation period, I propose to continue the exemption of BCD on raw materials, components, consumables, or parts for the manufacture of ships for another 10 years.
I also propose the same dispensation for shipbreaking to make it more competitive. Telecommunication. To prevent classification disputes, I propose to reduce the BCD from 20% to 10% on carrier-grade Ethernet switches to make it at par with non-carrier-grade Ethernet switches. Export promotion. To facilitate exports of handicrafts, I propose to extend the time period for export from 6 months to 1 year, further extendable by another 3 months if required. I also propose to add 9 items to the list of duty-free inputs. Leather sector. I propose to fully exempt BCD on wet blue leather to facilitate imports for domestic value addition and employment. I also propose to exempt crust leather from 20% export duty to facilitate exports by small tanners. Marine products. To enhance India's competitiveness in the global seafood market, I propose to reduce BCD from 30% to 5% on frozen fish paste, surimi, for manufacture and export of its analog products. I also propose to reduce BCD from 15% to 5% on fish hydrolysates for manufacture of fish and shrimp feed. In July 2024 budget, to promote development of domestic MROs for aircraft and ships, I had extended the time limit for export of foreign origin goods that were imported for repairs from 6 months to 1 year and further extendable by 1 year. I now propose to extend the same dispensation for railway goods. Time limit for provisional assessment. Presently, the Customs Act 1962 does not provide any time limit to finalize provisional assessments, leading to uncertainty and cost to trade. As a measure of promoting ease of doing business, I propose to fix a time limit of 2 years, extendable by a year, for finalizing the provisional assessment. I propose to introduce a new provision that will enable importers or exporters, after clearance of goods, to voluntarily declare material facts and pay duty with interest but without penalty. This will incentivize voluntary compliance. However, this will not apply in cases where department has already initiated audit or investigation proceedings. For industry to better plan their imports, I propose to extend the time limit for the end use of imported inputs in the relevant rules from 6 months to 1 year. This will provide operational flexibility in view of cost and uncertainty of supply. Further, such importers will now have to file only quarterly statements instead of a monthly statement. I now come to my direct tax proposals. In Part A, I have briefly underlined taxation reforms as one of key reforms to realize our vision of Vikasit Bharat. In respect of criminal law, our government had earlier ushered in Bharatiya Nyaya Sanhita, replacing Bharatiya Danda Sanhita. I am happy to inform this august House and the country that for new income tax bill will carry forward the same spirit of Nyaya in its drafting as well. The new bill will be clear and direct in text, with close to half of the present law in terms of both chapters and words. It will be simple to understand for taxpayers and tax administrators, leading to tax certainty and reduced litigation. Reforms, however, are not a destination. They are means to achieve good governance for our people and economy.
Providing good governance primarily involves being responsive. The Tirukkural captures this in verse 542, which reads, Vaanokki vaazhum ulagallam, mannavan kol nokki vaazhum kudi. Meaning, just as the living beings live expecting rains, citizens live expecting good governance. Our government is committed to keeping an ear to the ground and a finger on the pulse and responding while balancing our national building efforts. The following measures will detail just how our government will, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address. I repeat that sentence, sir. The following measures will detail just how our government, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address the needs voiced by our citizens. My tax proposals are guided by this spirit. The objectives of my proposals are as follows. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Rationalization of TDS and TCS for easing difficulties. Encouraging voluntary compliance. Reducing compliance burden. Ease of doing business. Employment and investment. I will come to my proposal on personal income tax towards the end. TDS and TCS, rationalization for easing difficulties. I propose to rationalize tax deduction at source, TDS, by reducing the number of rates and thresholds above which TDS is deducted. Further, threshold amounts for tax deduction will be increased for better clarity and uniformity. The limit for tax deduction on interest for senior citizens is being doubled from the present 50,000 rupees to 1 lakh rupees. Similarly, the annual limit of 2.40 lakh rupees for TDS on rent is being increased to 6 lakh rupees. This will reduce the number of transactions liable to TDS, thus benefiting small taxpayers receiving small payments. The threshold to collect tax at source, the TCS, on remittances under RBI's liberalized remittance scheme, the LRS, is proposed to be increased from 7 lakh to 10 lakhs. I also propose to remove TCS on remittances for education purposes, where such remittances is out of a loan taken from a specified financial institution. Both TDS and TCS are being applied on any transaction related to sale of goods. To prevent such compliance difficulties, I propose to omit the TCS. I also propose that the provisions of the higher TDS deduction will now apply only in non-PAN cases. In July 2024, the delay for payment of TDS up to the due date of filing statement was decriminalized. I propose to provide the same relaxation to TCS provisions as well. The government under the leadership of Prime Minister Modi believes in Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. In line with this, we brought in updated return facility in 2022 for voluntary compliance by taxpayers who had omitted to report their correct income. Our trust in taxpayers was proved right. Nearly 90 lakh taxpayers voluntarily updated their incomes by paying additional tax. Taking this trust further, I now propose to extend the time limit to file updated returns for any assessment year from the current limit of 2 years to 4 years. I propose to reduce the compliance burden for small charitable trusts and institutions by increasing their period of registration from 5 years to 10 years. It is also proposed
that disproportionate consequences do not arise for minor defaults such as incomplete applications filed by charitable entities. Presently, taxpayers can claim the annual value of self-occupied properties as nil only on the fulfillment of certain conditions. Considering the difficulties faced by taxpayers, it is proposed to allow the benefit of 2 such self-occupied properties without any condition. To streamline the process of transfer pricing and to provide an alternative to yearly examination, I propose to introduce a scheme for determining arm's length price of international transaction for a block period of 3 years. This will be in line with global best practices. With a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation, the scope of safe harbor rules is being expanded. A number of senior and very senior citizens have very old national savings schemes accounts. As interest is no longer payable on such accounts, I propose to exempt withdrawals made from NSS by individuals on or after 29th August 2024. I am also proposing to allow similar treatment to NPS Vatsalya accounts as is available to normal NPS accounts subject to overall limits. In my speech in July 2024, I had promised that all processes, including giving effect to appellate orders, shall be digitalized and made paperless over the next 2 years. So I'm happy to announce that digitalization is being made operational now. In July 2024, we brought in the Vivad Se Vishwas scheme to resolve income tax disputes pending in appeal. The scheme has received a great response, with nearly 33,000 taxpayers having availed of the scheme to settle their disputes. I have a few proposals to promote investment and employment. It is proposed to provide a presumptive taxation regime for non-residents who provide services to a resident company that is establishing or operating an electronics manufacturing facility. I further propose to introduce a safe harbor for tax certainty for non-residents who store components for supply to specified electronics manufacturing units. Presently, the tonnage tax scheme is available only to sea-going ships. The benefits of existing tonnage tax scheme are proposed to be extended to inland vessels registered under the Indian Vessels Act 2021 to promote inland water transport in the country. Extension for incorporation of startups. We continue to support the Indian startup ecosystem. I propose to extend the period of incorporation by 5 years to allow the benefit available to startups which are incorporated before 1/4/2030. In order to attract and promote additional activities in the IFSC, I am inter alia proposing specific benefits to ship leasing units, insurance offices, and treasury centers of global companies which are set up in IFSC. Further, to claim benefits, the cutoff date for commencement in IFSC has also been extended by 5 years to 31/3/2030. Category 1 and Category 2 AIFs are undertaking investments in infrastructure and other such sectors. I propose to provide certainty of taxation to these entities on the gains from securities, to promote funding from sovereign wealth funds and pension funds to the infrastructure sector. I propose to extend the date of making an investment by 5 more years up to 31st March 2030. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Democracy, demography, and demand are the key support pillars in our journey towards Vikasit Bharat. The middle class
provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings, and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax, that is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. Details of my tax proposals are given in the annexure. As a result of these proposals, Honorable Speaker, sir, revenue of about 1 lakh crore in direct taxes and 2,600 crores in indirect taxes will be foregone. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission,
I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 3, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2025. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. थैंक यू। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 3 फरवरी 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हेडलाइंस रही अर्थात कौन सब अर्थमंत्री पेड़ी खोली तार पूरा चित्र आम आपण देखा प्रति अपडेट आम आपण देवु। बजेट रे बड़ बड़ सब घोषणा होती क्यों क्षेत्र केते अनुदान होती तार चित्र आम देखा 12 लाख टंका पर्यंत आयकर छाड़। ये हूँ वर्तमान समय सबुठ बड़ खबर। 12 लाख टंका पर्यंत जदि आपणकर रोजगार रोचे ताहले आपणकु कौनसी टिकस पैठ करने पड़ो ना। अर्थात 12 लाख पर्यंत टिकस छाड़ करिसेंती केंद्र सरकार। बजेट रे आयकर को नहीं आसी बड़ घोषणा जहां नहीं तमाम चर्चा होता। 7,75,000 पुराना स्लाब रे रही अर्थात 7,75,000 पर्यंत टिकस दवाई पड़ू ना। ए सीमा को बढ़ाई सरकार। 12 लाख पर्यंत जदि आपणकर रोजगार अच्छी ताहले आपणकु कौनसी टिकस पैठ करने पड़ो ना। वर्तमान समय देशवासी सबुठ बड़ खबर कारण बजेट रे आसी ए संक्रांतीय बड़ घोषणा। करदाता मिली बड़ आश्वस्ति। 12 लाख टंका पर्यंत जदि आपणकर आय अच्छी ताहले आपणकु कौनसी टिकस पैठ करने पड़ो ना। पूर्व ए संक्रांत में तमाम चर्चा होता समस्त नजर में रही आयकर स्लाब रे सरकार कौन परिवर्तन करेंगे। यारी भितर बड़ खबर आसी कि 12 लाख पर्यंत जदि आपणकर रोजगार अच्छी अर्थात मासकू जदि आपणकर लक्षे टंका रोजगार ताहले आपणकु मध्य कौनसी टिकस दवाई पड़ो ना। ये हूँ वर्तमान समय सबुठ बड़ खबर बजेट जहाँ आसूची। निश्चित भाव में वर्तमान समय बजेट को लेकिन समस्त भितर जो उत्साह थिला तो बजेट को नहीं बड़ खबर आसी मासिक 1 लाख आयकारी को टिकस पड़ोनी। अर्थमंत्री बड़ घोषणा करिसेंती अर्थात ये गोटे बड़ घोषणा 12 रु 16 लाख जाए 15% टिकस मिल जहाँ बजेट को नहीं ब्रेकिंग आपण सामने रखुचु। सेहीपरि 16 रु 20 लाख जाए 20% रहित आम देखु बजेट रे अर्थमंत्री जो बड़ घोषणा करिसेंती सहित बजेट रे आम देखिलु आहुरी मध्य बड़ घोषणा करा जायछि विभू कहीं अर्थमंत्री जो बड़ घोषणा करिसेंती कि आयकरदाता जो कथा अनुमान कर जाउतिला ताहा एथर प्रतिफलन देखबा मिलिछि। अन्यपटे बिहार पई मध्य बड़ घोषणा करा जायछि नीतीश को खुशी करबा पई एथर बजेट रे बड़ घोषणा करा जायछि। बजेट रे अर्थमंत्री निर्मला
सीतारमण देशर बजेट रे बिहार राज्य पई बड़ घोषणा करिसेंती। अर्थमंत्री कहिसेंती राज्यर भविष्य को दृष्टि रखी चाहिदा को पूरण करिबा लागि एभली बड़ निष्पत्ति ने जायछि, किंतु आयकर स्लैब को नेकी समस्तंकर जो अपेक्षा थिला 24 लाख रु अधिक आय हेले 30% टिकस देवाक पड़िबो, जहां बजेट को नै वर्तमान लेटेस्ट खबर आसुची। बजेट रे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ए बड़ घोषणा करिसेंती। तो आर भितरे 12 लाख टंका जाय आपनकु आय कोनोसी इनकम टैक्स देवाक पड़िबो नाही, अर्थात 12 लाख टंका पर्यंत आयकर छाड़ नै बजेट रे अर्थमंत्री वर्तमान समय बड़ घोषणा करिसेंती। आमे कहि परिबा आयकर दातांक पई ए गोटे खुशीर खबर, 12 लाख टंका जाय कोनोसी आयकर देवाक पड़िबो नाही, जहां समस्त अपेक्षा थिला वार्षिक 12 लाख टंका आय जो मानक रही से को टैक्स देवाक पड़ो नहीं। 12 रु 16 लाख जाए 15% 15% आप टिकस देवे, से 16 रु 20 लाख जाए 20% और 20 रु 24 लाख जो मानकर से 25% टिकस देवे बोली अर्थमंत्री बड़ घोषणा करिसेंती। नुआ टिकस व्यवस्था कौन रही केते आपण टिकस देवे से संक्रांत समस्त तथ्य आपण मानक सामने राजीव साहू वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट आम सहित जोड़ुंट। श्रीजुक्त साहू आपको स्वागत करुच्ची। जो आशा करा जाउथिला सरकार स्लैब रे परिवर्तन करि पारंती से आशा आमे समस्त देखुचे फलवती होउची, प्राथमिक प्रतिक्रिया कौन रहिबो आपनकर? नहीं मु भाबुची जहाँ आमे सब एक्सपेक्ट करुथिले मु इंडिविजुअली बहुत खुशी, कारण मिडिल क्लास को जो उपेक्षित होइथिले से माने अनेक वर्ष धरी एजा गुटे बहुत बड़ सपोर्ट, बहुत बड़ रिकॉग्निशन मिडिल क्लास को, एवं जो डिस्टिंक्ट इम्प्रूवमेंट देखे आमे देखियो पाइलु 7 लाख रु 12 लाख बा लक्षे टंका पर्यंत जार इनकम अछि ताकू टैक्स देवाकू पड़िबो नाही, एवं तापर मध्य जो 12 रु 16 लाख 16 रु 20 लाख 20 रु 24 लाख ए जो स्लैब रे मध्य रिडक्शन करा गला, टैक्स इंपैक्ट कमे दिया गला, सेथिरे वर्ष को जने लोक लक्षे रु 2 लाख पर्यंत जो बेनिफिट पाउची सेटा आसीबो जे कंजम्पशन बढ़िया पई, मिडिल क्लास हाथ में अधिक सरप्लस रखा एवं जहाँ जहाँ आमे आशा करथिले बरं ताठू अधिका मिली एवं मु भाबुची एथिरे मध्यमित माने निश्चय खुशी रे रहिबे, सैलरीड लोक माने खुशी रे रहिबे, कारण तांको पई जो एक्सपेक्टेशन थिला से एक्सपेक्टेशन को मानवर। राजीव साहू आमे जो कथा आलोचना करूथिले होता सरकार मध्यवित्त को खुश करबा पई एभले गोटे बड़ घोषणा करिसंती बोली कहआ जिवो की? निहाती दरकार थिला, कारण से माने एटा तांकर हक थिला, तांकर न्याय थिला, एवं से माने मध्ये एथि पई जेतिकी तांकर कंट्रीब्यूशन थिला सोसाइटी को देश पई वर्तमान देश एवं सरकार तांको सेटा रेसिप्रोकेट करिसंती। तेणु एटा निश्चय मु कहबी जे जस्टिस मिडिल क्लास को दिया जायछि एवं जो प्रकार आमे आशा करथुलु से प्रकार बेनिफिट मध्यमित को आसी। तेणु आम समस्ते खुशी, मध्यमित खुशी रे एवं मु भावुची मध्यमित जो खुशी रे से देश खुशी कारण अनेक वर्ष धरी से जेटा बेनिफिट पाइबा कथा पाई नथिले, आज किंतु सबू बेनिफिट जो गुड़िक पाई नथिले एवं आगामी दिन एगुड़िक कंपेनसेट से निश्चय खुशी रहिबे। बिल्कुल, एवं निश्चय ए होची बड़ खबर। जदि जनकर रोजगार मासिक 1 लाख टंका पर्यंत अछि बा 1 लाख टंका अछि ताहेले मध्य से टिकस देबे नाही, अर्थात वार्षिक 12 लाख टंका पर्यंत कोनोसी टिकस पैठ करबा पई पड़िबो नाही। एहा बाद मध्य टिकस स्लैब रे अनेक परिवर्तन आसीची, कारण पूर्वरु 15 लाख उपरे जदि रोजगार अछि 30% टिकस दबा पई पडुथिला, जहाकु नै चर्चा हेउथिला, एवं ए स्लैब रे मध्य परिवर्तन करा जायछि। 24 लाख रु जदि अधिक टंका रोजगार अछि ताहेले 30% टिकस दबा पई पड़िबो, जहाकु नै चर्चा करा जाउथिला बा अनुमान करा जाउथिला। बजेट रे तारो प्रतिफलन आमे देखुचे। श्रीजुक्त राजीव साहू, एहारो प्रभाव जनसाधारण को ऊपर किभली भाबरे पड़िबो, देशर अर्थनीति ऊपर केमिति पड़िबो, एवं केंद्र सरकार किछिटा टिकस आदाय हरई पारंती ए आकलन मध्य करा जाय पारे? देख एटा जो प्रश्न जे एटा साधारण रे निश्चय ग्रहणीय होबो, मध्यमित गोटे बड़ सेक्शन से माने एथिरो बेनिफिटेड हेबे। जो हासिल थिला जो 12 लाख पर्यंत जो टिकस रिटर्न फाइल करिया कथा सेथिरे मध्य कोल करा जायछि, एटा कंजम्पशन बढ़ेबो। तेणु सबु वर्गर मध्यमित जो आरंभ करी धनी एवं गरीब लोकों पई एटा गोटे जेतु डिमांड बढ़ौछि, कंजम्पशन बढ़ौछि, सेमाने मध्य एथिरु लाभवान हेबे।
एवं समस्त जेतेबेले खुशी रहिबे समस्तंकर जेतेबेले प्रोडक्टिविटी बढ़िबो कंट्रीब्यूशन बढ़िबो सेतेबेले देश मध्य खुशी रहिबो एवं जो 1 लाख कोटी टंका सैक्रिफाइस करूछंती सरकार सेटा मोर देन कंपेनसेट हबो अन्य बाटरे कारण तापरे जो जीएसटी जो कंजम्पशन करा जिवो सेतिर जीएसटी मध्ये आदाय करा जिवो इंडस्ट्री माने बेनिफिटेड हेबे से माने मध्ये अधिक प्रॉफिट करिवे से माने मध्ये अधिक टिकस देबे तेनो ओवरऑल आपण जदी देखिबे मो भाबुची सरकार खूब माने भलो आकार रे अर्थात राजीव साहू जहाँ सरकार का फोकस थिला लोकन को हाथ रे टंका रहू मध्यवित्त माने केमती उपकृत होई परिबे ताहा एथरो बजट रे हमें कहि परिबा प्रतिफलन देखिबा को मिलिची निश्चय भावे सरकार सामग्रिक भावे इनफैक्ट बजेट को जदि देखिबे एटा गोटे बोधे 10 रु 10 मार्क पाइबो एवं ता संगे संगे ए जो डिमांड थिला जे मध्यमित्त एथिरु किभली उपकृत हेबे एवं सेटा को से माने सरकार खूब भलो भाबरे मध्यमित्त को रिकॉग्नाइज करूछंती मध्यमित्त को बेनिफिट मध्य देइछंती एवं सेथिरे सामग्रिक भावे अर्थनीति रे गोटे भल परिवर्तन आसिबो गोटे सकारात्मक चिंताधारा रे गोटे सुफलन आमे देखि परिबा तार आउटकम रे ए जो बजेट रे एवं बजेट रे जो प्रावधान रही सेगुड़िक सब ग्रोथ ओरिएंटेड आमर जेतेबेले विकसित भारत पाई जहाँ जहाँ दरकार बजेट तार प्रतिफलन आपण देखुचंती तेणु निश्चय स्वागत करिवे एवं बजेट रु बड़ खबर आसुची टिकस व्यवस्था रे आमे देखुचे एक बड़ परिवर्तन करा जायछि स्लैब रे परिवर्तन करा जायछि एवं ए संक्रांत रे अर्थमंत्री मध्य घोषणा करिसंती बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त राजीव साहू आपनका प्रतिक्रिया पाई तेबे दर्शक बंधु देशवासी जो अपेक्षा रहिथिला अर्थात मध्यवित्त जो माने टिकस परिसरभुक्त थिले सेमानकर आशा थिला कि स्लैब रे परिवर्तन करि पारंती सरकार एवं तार प्रतिफलन देखुचे बड़ खबर हेउची 12 लाख टंका पर्यंत जदि आपनकर वार्षिक रोजगार अछि ताहेले कोनोसी टिकस पैठ करिबा पई पड़िबो नाही टिकस संक्रांतीय घोषणा समय कौन कहिसंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आपण सुनि नियंतु July 2000 tax regime. I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax, that is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजेट को नहीं बड़ घोषणा करिसेंती एवं ये टैक्स को नहीं बड़ घोषणा करिसेंती इनकम टैक्स विशेष करके जो माने देखो आयकर दाता पई एक बड़ खबर बोली विभु कहा जाय परिबो जेतेबे देखिबा कि 12 लाख टंका पर्यंत आ कोनोसी देखिबा कि आयकर देबा को पड़िबो नाही ता सहित बड़ घोषणा करिसेंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 12 लाख पर्यंत टैक्स फ्री कर दैछंती मोदी सरकार केवल सतिकी नुहे 12 रु 16 लाख पर्यंत 15% टैक्स दिया जिवो बोली घोषणा कर जायछि 20 रु 24 पर्यंत आय जो रहिछि 25%
से टैक्स देवा अर्थमंत्री घोषणा करिसेंती जहां निश्चित भाव में कहि परिबा ये आयकर दातांको पे एक खुशी खबर आनी लंबा समय धरे ये चर्चा होता कि टिकस परिमाण रे स्लाब रे परिवर्तन करि पारंती एवं तार प्रतिफलन आमे देखुचे आम सहित वरिष्ठ सांबादिक सुभाकर पट्टनायक रोचंती तांको ठारु आमे विस्तृत भाव में बुझिबा कि यार आवश्यकता केते थिला बा स्लाब रे परिवर्तन करिबारो एहा द्वारा जो वर्ग उपकृत हेबे सेमानकर संख्या कोन होई पारे सेमाने किभली भाव में लाभवान हेबे एवं देशर अर्थव्यवस्था को यह किभली बूस्ट करिवो सुभाकर विस्तृत भाव में बुझांतु आवश्यकता एवं यार प्रभाव सब कोन पड़िबो साधारण लोकंक उपरे देशर अर्थव्यवस्था उपरे। हाँ विभु एक्चुअली मध्यवित्त वर्ग बहुत दिन दाबी करी आसुले जे तांकर टैक्स कर रिहाती दि जाऊ जोटा को मोदी सरकार मानिचंती आ सुनिचंती से हिसाब रे से ए वर्ष टैक्स स्लैब रे भी परिवर्तन आनिचंती ए टैक्स स्लैब न्यू टैक्स रिजिम ये रे मिलिवो ओल्ड टैक्स रिजिम रे मिलिवोनी तो जो माने नुआ टैक्स रिजिम को आपणेबे से माने ही कर रिहाती पाइबे एई अनुसार सेमान को 12 लाख जाए टैक्स रिहाती मिलिवो प्लस या सहित 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन अच्छी अर्थ 12,75,000 आय पर्यंत सेमान को कर देवा को पड़ो ना या अधिक दर आय हेले सेमान को कर देवा पड़ो या सहित सरकार टैक्स स्लैब रे भी परिवर्तन करचंती जोटा कि 20 रु 30% टैक्स स्लैब रोला ताकू भाग करी 20 रु 25 25 रु 30% टैक्स स्लैब ता तैयारी करचंती गोटे नुआ टैक्स स्लैब करचंती या द्वारा मध्यवित्त श्रेणी रो मध्यवित्त आय वर्ग बहुत परिमाण रे लाभवान हेबे तांको हाथ रे अधिक संचय रहिबो से माने अधिक खर्च करि परिबे। सुधाकर जितने प्रधानमंत्री गत काली कही मध्यवित्त हाथ में लक्ष्मी रुहतु मध्यवित्त मानकर क्रय सामर्थ्य रहू अर्थात मध्यवित्त फोकस करे गोटे ये बड़ खबर और खुशी खबर आम बड़ गिफ्ट बोली कहर बजेट मिली जिते 12 लाख टंका पर्यंत आय थे वार्षिक आम कहीपर 80,000 टंका बंचला। हाँ निश्चय एक्चुअली या बहुत दिन है दाबी रही से मुद्रास्फीति इनफ्लेशन बढ़ी दर वृद्धि बढ़ मध्यवित्त पाखे संचय रोना हाथ में पैसा आसुना जहाँ दरमा मिलता सरी जाऊला से बर्तमान यही टैक्स स्लैब वृद्धि द्वारा से किसी संचय रही हाथ खोला कर खर्च करेंगे निश्चित भाव में मध्यवित्त एक बड़ सरकार देय कही हम। ओके सुभाकर जमी आम देखुचे बर्तमान नुआ टैक्स रिजिम रे जे माने जाउचंती से माने 12 लाख पर्यंत रोजगार पर्यंत कोनोसी टिकस देबे नाही किंतु ता सहित पुराना टिकस व्यवस्था प्रचलन रहिबो किंतु एई पदक्षेप कुहा जाई पारे कि लोकन को गुटे प्रकार आकर्षित करिवो ए नुआ व्यवस्था रे बा नुआ टिकस प्रणाली रे टिकस पैठ करिवा पई मोटामोटी भाव में कुहा जाई पारे कि लोके धीरे धीरे पुराना व्यवस्था को भूली जिवे एवं नुआ रे एटीसी बा अन्य से जे सबुर आवश्यकता थाए तार कोनोसी आवश्यकता रहिबोनी। हाँ निश्चित भाव सरकार चाहते समस्ते सरल टैक्स सरलीकरण हो एवं सरल अति सहज टैक्स दे पारंतु से न्यू टैक्स रिजिम व्यवस्था कराई एवं सरकार चाहते समस्ते ओल्ड टैक्स रिजिम छाड़ी नुआ टैक्स रिजिम नियंतु से केवल नुआ टैक्स रिजिम रे रियाती दिया पुराना टैक्स रिजिम रे कौन अधिक जहाँ पूर्व रही अधिक कौन रियाती दि जाऊना तो ये नुआ टैक्स रिजिम बल 12,75,000 टंका पर्यंत से कर देवा पड़ोनी कारण नुआ टैक्स रिजिम रे 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन अच्छी किंतु ता सत्वे जे पुराना व्यवस्था रे जीवा पई चाहूचंती पूर्व भली एटीसी हो बा शिक्षा लोन हो घर लोन हो ए सब रे ऊपर जो सब सुविधा पाउतिले बा छाड़ पाउतिले ता बलवत्तर रहिबो। हाँ जो माने ओल्ड टैक्स रिजिम रे सुविधा नबा चाहूचंती हाउसिंग लोन इंटरेस्ट हो एटीसी रे 1.5 लाख हो कि स्वास्थ्य बीमा ऊपर 50,000 पर्यंत हो कि घर भड़ा ऊपर नबा चाहूले रिहाती नबा चाहते से ओल्ड टैक्स रिजिम थ्रू रे टैक्स फाइल करेंगे और तार सुविधा नहीं पारे सरकार दुईटी एक व्यवस्था रखिंट ओल्ड टैक्स रिजिम एपर्यंत बंद कराई से बलवत्तर रही।
सुभाकर बड़ कथा होची कि देश में कर देबारे मध्यवित्तर गोटे बड़ योगदान रही ये कहीपर सरकार जितेबाला एभली बड़ घोषणा करिसेंती जहाँ द्वारा सेमानक भितर गोटे बड़ आश्वस्ति मिली कहीं सरकार चाहिए कि लोकों हाथ में टंका रहू फल से गोटे क्रय सामर्थ्य रही जो कथा कहला कि आयकर छाड़ सीमा 10 लाख टंका पर्यंत बढ़ी पारे किंतु सरकार देखा कि ताठार आहरी खुशी बढ़ाई देइछंती तो ये आम द्वारा भारतर अर्थनीति आहरी सुदृढ़ हो बोली कह जाई परिबो कि हाँ निश्चित भाव में या द्वारा अर्थनीति विशेष सुदृढ़ हम कारण लोकों पाखे जो अर्थ आसो से निश्चय भाव किसी नुआ जिनस किनिया चाहिए किसी अलग संचय करेंगे जो उभय उभय माध्यम सरकार को परोक्ष व प्रत्यक्ष भाव में उपकृत हम और देशर विकास हम एन संदेह नहीं द्वारा बहुत अधिक संख्यक मध्यम वर्ग टैक्स फाइलिंग इच्छा प्रकाश कर आम पूर्व व्यवस्था देखी 15 लाख जो मानकर अधिक रोजगार थिला से 30% टिकस करा जाइथिला एवं से वर्गर लोके आम देखुले अनेक समालोचना करुले तेणु से आश्वस्ति कारण 24 लाख रु जदि अधिका रोजगार होची ताहले 30% टिकस दबा पई पड़िबो हाँ 15 रु प्रथम 15 लाख ऊपर 30% थिला से स्लैब टाको भांगी देकरी 15 रु 20 लाख मध्य 20% 24 लाख 25% एवं 24 लाख अधिक आय उपर 30% सरकार करछंती जहाँ एक निश्चित भाव अनेकों को खुशी करेबो कारण यह सेमानकर भी बहुत दाबी थिला जे एते कम आय ऊपर 30% कर देवा निश्चित भाव एक काठिकर थिला सेमानक ता सहित 25% गोटे नुआ स्लैब हैला हाँ 20 रु 24 लाख नहीं कि गोटे नुआ स्लैब सरकार गठन करछंती जोटे 25% कर देबा पड़िबो समान बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपन विस्तृत सूचना पाई एवं दर्शक बंधु बजेट क्यों सब बड़ दिग बजेट हेडलाइंस कौन आम क्रमान्वय आपको देखाइबा चेष्टा करुचु सरकार कौन सब बड़ पदक्षेप नहीं आम 10टी बड़ दिग बड़ पॉइंट को नहीं आपण सामने बर्तमान उपस्थापन करुचु निश्चित भाव में 10टी पॉइंट बजेट 10 बड़ पॉइंट बजेट रे आयकर को नहीं बड़ घोषणा करा जायछि ता सहित 12 लाख टंका पर्यंत आयकर सीमा छाड़ करा जायछि ता मासिक देखिबा कि 1 लाख आय ऊपर कोनोसी कर पड़िबोनी 12 रु 10 लाख हमें कहि परिबा बिभु 12 रु 16 लाख आय ऊपर मध्य कर पड़िबो 16 रु 20 लाख रोजगार ऊपर 20% कर देबा पई पड़िबो से भली 20 रु 24 लाख आय पई 25% टिकस ए होछि नुआ स्लैब 24 लाख रोजगार ऊपर 30% टिकस निश्चित भाव में आयकर स्लैब रे ये बड़ परिवर्तन करा जायछि समस्त को नजर थिला सेहि घोषणा करिसेंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण होछि बजेट रे 10टी बड़ कथा आज संसद रे उपस्थापन होछि केंद्र बजेट 2025-26 अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अष्टम थर पई संसद रे बजेट उपस्थापन करिसेंती तेबे बड़ कथा होछि बजेट रे इनकम टैक्स को नै बड़ घोषणा करिसेंती अर्थमंत्री 12 लाख टंका पर्यंत टैक्स छाड़ घोषणा करिसेंती अर्थमंत्री कैपिटल गेन छड़ा अन्य आय 12 लाख टंका पर्यंत टिकस छाड़ नै घोषणा करिसेंती कैपिटल गेन थिले 8 रु 12 लाख पर्यंत आयकर 10% रहिबो सेहिपरि 12 रु 16 लाख पर्यंत आय पई 15% आपण टिकस देबे सेहिपरि 16 लाख रु 20 लाख पर्यंत आय पई 20% 20 रु 24 लाख पई आय पई 25% एवं 24 लाख रु अधिक आय पई टिकस 30% आपण देबा पड़िबो अनेपटे 12 लाख टंका पर्यंत आय थिले आपण भाबंतु वार्षिक आपनकु 80,000 टंका एठी बंची जिवो सेहिपरि 18 लाख पर्यंत आय थिले आपनकु वार्षिक 70,000 टंका पर बंचिबो 25 लाख पर्यंत आपनकर जदी इनकम रोची वर्ष को आपनकर 1.25 लाख अर्थात 1,25,000 टंका आपण सेव करि परिबे जहा द्वारा ये मध्यवित्तक पई मध्यवित्त वर्ग को खुश करबा पई बड़ घोषणा करिसेंती अर्थमंत्री जहा द्वारा मध्यवित्तकर जीवन धारण आहुरी कहि परिबो सुदृढ़ हेबो बिल्कुल एवं मासकु जदि आपनकर रोजगार लक्षे टंका अछि ताहेले मध्य चिंता करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही कारण आपण सरकार को टिकस पैठ करू नाहंती एवं बजेट रे ए संक्रांतीय बड़ घोषणा करा जायछि वार्षिक जदि आपनकर रोजगार 12 लाख टंका ताहेले आपनकु कोनोसी टिकस पैठ करिबा पई पड़िबो नाही पूर्वरु कोन थिला पूर्वरु 7 लाख टंका पर्यंत आपनकु टिकस दबा पई पड़ु नथिला एहा बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन बाबद रे सरकार 75,000 टंकार रिबेट बा छाड़ देउथिले मोटामोटी भाव में 7 लाख 75,000 टंका पर्यंत जार रोजगार रही से कौन टिकस पैठ करू नथिले एवं अनुमान करा जाउथिला सरकार एथिरे वृद्धि करिवे किंतु आशा ठारू मध्य अधिक वृद्धि करिसंती कहले भूल हेबो नाही कारण 12 लाख पर्यंत जदि जार वार्षिक रोजगार अछि ताठारू कौन टिकस नेबे नाही सरकार ए होची वर्तमान समय बड़ खबर एहा बाद
आयकर स्लाब रे मध्य अनेक परिवर्तन करा जायछि कारण 24 लाख रु जहार रोजगार जदि अधिक ताहेले सेमाने 30% टिकस देबे पूर्वरु जहा 15 लाख रही तेणु ताकू नहीं मध्य अनेक आलोचना हेउथिला एवं सरकार पूरा टिकस व्यवस्था रे केमिति जनसाधारण को सुहाइब मध्यवित्त केमिति उपकृत होई पारिबे जो मानकर कम रोजगार रहउछि सेमाने केमिति टिकस परिसर भुक्त न हेबे ता उपरे यथेष्ट गुरुत्व देइछंती से बली 12 रु 16 लाख आय उपरे 15% टिकस देबा पई पड़िबो अन्यपटे जदि 16 रु 20 लाख रोजगार रही ताहले 20% 20 रु 24 लाख रोजगार पई 25% एवं आपनकर रोजगार जदि 24 लाख रु अधिक रही ताहले 30% रु अधिक टिकस देबा पई पड़िबो ए होची नुआ टिकस स्लाब जहां आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजेट उपस्थापन समय घोषणा करिसेंती निश्चित भाबरे ये बजेट रे मध्यवित्तक पई ये गोटे खुश खबर हमें कहि परिबा मध्यवित्तक को खुश करबा पई बड़ प्रयास हमें करा जायछि एवं बड़ आश्वस्ति आसी जायछि बोली कह जाय परिबो काहेकिना प्रधानमंत्री को कथारु जणा पडुतिला बजेट रे मध्यवित्तक पई किछि भलो रहिछि किंतु आशा थारु अधिक देखिबा कि एथर अर्थमंत्री बड़ घोषणा करिसेंती बजेट रो जो 10टी बड़ दिग जाहाकु हमें चर्चा करूछु प्रकृत रे 20 रु 24 लाख जाय आय पई 25% आपण आनिकी टिकस देबे सेही परि 24 लाख रोजगार ऊपर आपण 30% टैक्स देबे आयकर स्लैब रे बड़ परिवर्तन होईछि एवं समस्त अपेक्षा थिला एथर कोन प्रकृत रे परिवर्तन होई पारे जा घोषणा करिसेंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ये मध्यवित्त परिवार को बड़ आश्वस्ति आणुछि काहेकि सरकार चाहिछंती लोकन को हाथ रे ठी टंका रहू फल रे सेमानकर जो क्रय करिवार सामर्थ्य बढ़िबो एवं कुआ जाउछि आयकर सीमा पूर्व कुआ गला कि 10 लाख पर्यंत बढ़ी पारे किंतु सरकार एठी 12 लाख पर्यंत पूरा देखिबा कि जेभली पदक्षेप नेछंती कोनोसी इनकम टैक्स दबा को पड़िबो नाही जो द्वारा कि मध्यवित्त श्रेणी लोके उपकृत हेबे एवं आम भारत अर्थनीति को आखि आगे रखी एभली गोटे बड़ पदक्षेप निया जायछि एवं ता सहित आपण देखंतु धनी गरीब मध्यवित्तक भीतर गोटे संतुलन आनिबा को सरकार एठी प्रयास करिसेंती एवं विशेष करी मध्यवित्तक खुश करबा पई आयकर स्लैब रे एभली बड़ परिवर्तन आना जायछि लंबा समय धरी यही चर्चा होता कि सरकार टिकस स्लैब रे परिवर्तन करिपारंती एवं तार प्रतिफलन आम वर्तमान बजेट रे देखिचे कारण पूर्व 7 लाख पर्यंत टिकस छाड़ थिला सेथिरे 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन रही एथिरे वृद्धि करिसेंती सरकार एवं 12 लाख टंका पर्यंत टिकस छाड़ मासिक जदि रोजगार 1 लाख अछि ताहेले कोनोसी चिंता करिवार आवश्यकता नाही कारण आपण टिकस पैठ करबा पई जाउ नाहंती सेही बोली 12 रु 16 लाख पर्यंत 15% 16 रु 20 लाख पर्यंत जदि रोजगार अछि 20% 20 रु 24 लाख पर्यंत जदि आपनकर आय अछि ताहेले 20% एवं 24 लाख रु जदि अधिक आय अछि ताहेले आपण 30% टिकस पैठ करिवे जो आशा करा जाउथिला सरकार से आशा उपरे छिड़ा होइचंती टिकस व्यवस्था रे बड़ परिवर्तन करा जायछि एवं खास करिके फोकस रे रहिचंती मध्यवित्त परिवार गोटे पटे दरदाम वृद्धि मुद्रास्फीति याकु नै मध्यवित्त परिवार सबु चिंता रे रहितिबा बेले टिकस रो मध्य गोटे अतिरिक्त बोझ तांको उपरे रहितिला तेणु सरकार वर्तमान चेष्टा करिचंती कि तांको उपरे वर्तमान सेही बोझ हटाइबा पई तबे यूसीसीआई पक्षरु वर्तमान एक सांबादिक सम्मेलन करा जायछि खास करिके बजेट को नै कोन सब कुआ जाउछि आसंतु सुनि नबा फाइनेंस मिनिस्टर को मंतव्य जना पड़ला कि बहुत बड़ धरण सिंप्लिफिकेशन इनकम टैक्स बिल रे करा जाउछि नुआ इनकम टैक्स बिल आसिले और बाकी सबू डिटेल प्रोविजन्स आमे पाइले आमे फर्दर प्रतिक्रिया दे पारिबु बट ओवरऑल this budget for middle class I will give 9 out of 10 marks आज्ञा बहुत बड़ रिलैक्सेशन अच्छे ना से जति फाइनेंस मिनिस्टर कहिसंती मैडम तो सेतिके मु वर्तमान प्रतिक्रिया देबा चाहूची जते बेला हमें बजेट रो कॉपी पाई जिबु तापरे हमें वी कैन गिव यू इन पर्टिकुलर सेक्टर वाइज प्रतिक्रिया बर्तमान जी आम अभिभाषण शुणीचु बुझीचु से मुझे ग्रे एरिया मैडम से डिटेल बजेट आसिले जना पड़ो देखो तो जो कथा एक्सपर्ट माने कहले
पूरा प्रेस मीट आम निश्चित भाव में देखू बजेट को बेस भल बोली कहते कहीं 12 लाख पर्यंत आयकर छाड़ कर केन्द्र बजेट में मध्यवित्त को खुशी करने को बड़ घोषणा करिसेंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन। आयकर छाड़ सीमा 12 लाख टंका को वृद्धि पाई। आयकर रिटर्न फाइल करिवार समय सीमा को 2 वर्ष रु 4 वर्ष को वृद्धि करा जायछि एवं निश्चित भाव में जहाँ द्वारा मिडिल क्लास विशेष भाव में उपकृत हेबे। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन ए बड़ घोषणा करिसेंती आयकर सीमा बढ़िबा द्वारा लोकंक पाखरे अधिक अर्थ रहिबो, अधिक टंका रहिबो, सेमाने ता द्वारा खर्च करि परिबे। एहा द्वारा अर्थनैतिक कार्यकलाप वृद्धि पाइबा द्वारा अभिवृद्धि त्वरान्वित हेबो। आम कहीपर पॉजिटिव स्टेप्स इन डिटेल जो बजेट डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट माने पढ़िबे जे ओवरऑल वेरी वेरी फैक्ट्री बजेट इन द राइट डायरेक्शन गोटे ईयर 1,25,000 कोटी टंकार रेवेन्यू लॉस सरकार सहिबे रिडक्शन द्वारा किंतु सरकार कैलकुलेशन अच्छी जे 1,25,000 कोटी टंका इकोनॉमी रे खर्च करने मिडिल क्लास एनेबल हो मिडिल क्लास जो खर्च कर इन्वेस्ट कर इकोनॉमी को बूस्ट दब इनडायरेक्टली। आपन देखंतु रूरल इकोनॉमी एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी होची इंडिया तो रूरल इकोनॉमी बढ़िले ही आम देशर प्रोडक्शन बा प्रगति हो पारिबो। सेही दिगरे जेतिकी एग्रीकल्चर रिफॉर्म से आणुचंती आमे देखुचे जे प्रोडक्शन हो पारले पल्सेज रो रेट कमी पारिबो। आमे दरदाम उपरे प्राय ऑपोजिशन रो नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबो जे दरदाम उपर तो काई किछ कहिलेनी। आपण पदक्षेप को जदि एनालिसिस करिवे जदि पल्सेज को प्रोडक्शन बढ़ाइबार पदक्षेप निया गला ताले दरदाम रो कंट्रोल ऑटोमेटिक आसीबो। आपण जेतोले मिडिल क्लास को एनेबल करिवे ताले बहुत लोक जो माने इनकम टैक्स स्लैब रे नाहंती आजी 140 कोटी पॉपुलेशन रो वेरी फ्यू परसेंटेज इनकम टैक्स एसएससी अछंती तारो नेट टाको बढ़ाइबा पई ए स्लैब रो रेट बढ़ाइबा 12 लाख पर्यंत एक्जेम्प्ट करिवार निहाती दरकार थिला। जेते टैक्स रो सरलीकरण हबो साधारण लोक सेतिकी इनकम टैक्स बेस रे बहुत लोक एंटर करिवे नुआ एई वर्ष ठारू आपण देखि परिबे। नेक्स्ट बजेट वाल को आपण एनालिस्ट मानटो सुनिबे जे भारत रे जदि 1.5 कोटी टैक्स पेयर थिले से बोधे 2.5 कोटी हे गले कि 3 कोटी हे गले। एई दिशा एई रिफॉर्म्स गुडा को ही लोगों को इनवाइट करे टू जॉइन द मेन स्ट्रीम। उत्कल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स प्रेस मीट आपण सुनिथिले रूरल इकोनॉमी जहाँ द्वारा बेस उपकृत हो पारिबे मिडिल क्लास जहाँ द्वारा बेसी आश्वस्ति आनी देछंती कहीं ना या द्वारा गोटे रिफॉर्म आसीबो आम भारतर अर्थनीति आहुरी सुदृढ़ हेबो और एभली पदक्षेप को समस्त मध्य आम कहि परिबा स्वागत करा जाउची। किंतु बजेट रो जो 10टी कथा को नेकी आमे चर्चा करूचे आलोचना करूचे आज सारा देशर नजर थिला 12 लाख टंका पर्यंत आयकर सीमा को छाड़ करा जाइछि एवं अर्थात आपण मासिक 1 लाख आय पर्यंत कोनोसी देखिबा कि आपण को दबा को पड़िबो नाही टैक्स। विक्रम मो सहयोगी वर्तमान आम सह जोड़ी होचंती। विक्रम ये मध्यवित्त को खुश करबा पई एभली गोटे बड़ घोषणा करा जाइछि बोली कहजिबो कि काहे कि ना ये गोटे बड़ रिफॉर्म मध्ये आनिबो एभली पदक्षेप को सब स्वागत करूचंती। निश्चित भाव में कारण एइथिपाई जे मध्यवित्तक उपरे बहुत बड़ चाप थिला एवं ए जो बड़ चाप थिला ताकू मध्यवित्तक पॉकेट को अर्थ आवश्यकता थिला जहाँ देशर ग्रोथ इंजिन भाव में काम करिवो। आपण मो पछपटे देखि पारुचंती एठी बजेट रे बड़ घोषणा करचंती अर्थमंत्री एवं 12 लाख टंका पर्यंत आयकर को संपूर्ण छाड़ करचंती अर्थात मासिक 1 लाख टंका पर्यंत आय उपरे कौनसी कर पड़िबो नाही। 12 रु 16 लाख टंका पर्यंत एवं 16 रु 20 लाख टंका पर्यंत 20%, 12 रु 16 लाख 10%, 20 रु 24 लाख टंका पर्यंत आय 25% हार टिकस देवा पड़िबो एवं से भली भाबरे 24 लाख टंका रोजगार उपरे 30% टिकस देवा पड़िबो। आयकर स्लैब रे बड़ परिवर्तन कर दैछि एवं ए संपर्क रे अर्थमंत्री स्पष्ट घोषणा करछन्ती बजेट अभिभाषण रे मध्यवित्त परिवार को बड़ आश्वस्ति मिलिछि। या पछरे बड़ कारण होउछि जे मध्यवित्तंकर पॉकेट को पैसा देवाक पड़िबो एवं बजेट रे 12 लाख टंका पर्यंत जदि आमे स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिसा जाए ए स्लैब हम 12,75,000 तेणु 12,75,000 पर्यंत आपन को कौनसी प्रकार टिकस देवाक पड़िबनी ए प्रकार बड़ घोषणा करछन्ती अर्थमंत्री एवं 16 रु 20 लाख पर्यंत 20% एवं 20 रु 24 लाख टंका पर्यंत आय लगी 25%। या पछर बड़ कारण जहां आपन कहिले जे इन्फ्लेशन कंट्रोल रे रहु नथिला, मार्केट रो ग्रोथ हो नथिला, मनी ट्रांजैक्शन हो नथिला एवं
देशर जो ग्रोथ थिला जीडीपी रो ग्रोथ हार से गोटे स्टैग्नेंसी आसी जाइतिला गोटे 6.5 6.2 यार भीतर रह जाइतिला एबे जो विभिन्न एजेंसी जो प्रेडिक्शन करथिले से ग्रोथ ता 6.2 6.5 एमती रहितिला याकू आउ टिके पुश करिवार दरकार थिला एवं जो डबल डिजिट ग्रोथ कथा कुआ जाउची 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कथा कुआ जाउची ये सबु बिना मध्यवित्तर सहयोग रे होई परिबो नाही एवं एई जो मध्यवित्त हाथ को पैसा दबा पाई मध्यवित्तर पाखरे जो पैसा आसीबो से पैसा केमिति दिया जाई परिबो सेमानकर अधिकांश अर्थ पळे जाउतला इनकम टैक्स रे जहाकू वर्तमान अर्थमंत्री सीतारमन स्पष्ट भाव रे टिकस हार रे परिवर्तन करी टिकस स्लैब को टिके ब्रैकेट को आउट के बड़ करी स्लैब रे चेंजेस आनी ए प्रकार परिवर्तन आनिचंती एवं आपण देखुचंती जे स्क्रीन रे केते बड़ घोषणा 12 लाख टंका पर्यंत संपूर्ण आयकर छाड़ एवं जदि स्टैंडर्ड डिडक्शन मिसा जाए 12,75,000 अर्थात मासकू 1 लाख टंका पर्यंत बा ताठू टिके सामान्य अधिका जदि 5,000 1 लाख 5,000 1 लाख 7,000 पर्यंत करेंगे आपको कौन टैक्स दबाक पड़ो ना अन्य पक्षरे जदि आपण 24 लाख ऊपर को करुँच ताहले आपण 30% टैक्स लगे एबे जो स्लैब रही ए स्लैब रे प्रथम 12 लाख मुझे स्पष्ट करने चाहूँगी जे प्रथम 12 लाख टंका पर्यंत स्लैब जो रही पुणी 0 ରୁ 4 एवं 4 ରୁ 8 8 ରୁ 12 एमती रही किंतु लागू हम जो मैंने 12 लाख ऊपर को इनकम करुवे अर्थात 12 लाख जदि आप टंकाटे ऊपर को इनकम कर 4 लाख ରୁ 8 लाख और 8 लाख ରୁ 12 लाख 5% और 10% यथाक्रमे से 10.5 यार हिसाब को निया सी प्राय 60,000 टंका जहाँ को कौन कर रिबेट आकार दि जाइए अर्थात से रिहाती आकार मिल कौन आयकर दाता तेणु यही जो बड़ घोषणा ये बड़ घोषणा निहाती भाव में मध्यवित्त लगी गोटे बड़ खुशी खबर ग्रामीण विकास रे देशर विकास एवं ये रूरल इकोनॉमी ऊपर सरकार फोकस करिसंती अर्थात सरकार जो पदक्षेप आयकर सीमा बढ़िबा द्वारा लोकंक पाखरे अधिक अर्थ रहिबो सेमाने अधिक खर्च करि परिबे एहा द्वारा हमें कहि परिबा ये अर्थनैतिक कार्यकलाप आहुरी वृद्धि पाइबो अभिवृद्धि आहुरी त्वरान्वित होई परिबो निश्चित भाव में केमिति हबो कारण ता पछर निर्दिष्ट कारण अछि आपन को पॉकेट को जदी लिक्विड मनी आसिला अर्थात लिक्विडिटी मार्केट रे बढ़िला से मनी निहाती भाव में मार्केट रे फ्लो हबो बिजनेस ट्रांजैक्शन बढ़िबो एवं मार्केट साइज बढ़िबो मार्केट रे जतबेले मार्केट साइज बढ़िबो मार्केट रे किना बिका अधिक हबो प्रोडक्शन भी बढ़िबो प्रोडक्शन बढ़िले देशर प्रोडक्टिविटी बढ़िले ऑटोमेटिकली सेटा जीडीपी बढ़िबो एवं ए जो कथा मु कहूची काहे कि आसीबो मु टिके बुझिया पई चाहिबी देखंतु वर्तमान एठी किछि टैक्स स्लैब देचंती जहां घोषणा करचंती अबिकल आमे सेया को रखिछु स्क्रीन रे देखंतु एठी आपण लक्ष्य करिवे जे किभଳି भाबरे टैक्स रो स्लैब रहिछि 0 ରୁ 4 लाख ए जो 0 ରୁ 4 लाख पर्यंत इनकम थिला ता लगी पूर्वरु कोनोसी आयकर दबाकू पड़ू नथिला एबे भी दबाकू पड़िबो नाही से भली भाबरे 4 ରୁ 8 लाख पर्यंत 5% टिकस पड़ूला एबे मध्य से 5% टिकस पड़िबो मु कहिबी आपण कहिबे जे काहे की कहउचंती आपण कहले तो 12 लाख पर्यंत किभଳି भाबरे टैक्स पड़िबो नाही एबे पुणी केमती कहउचंती एटा पुराना स्लैब कथा मु कहउची जा कि एबे भी बलवत्तर रहिछि मु केमिति सेटा बुझेइबी से भली भाबरे 8 ରୁ 12 लाख आपण देखंतु एठी 10% टिकस पड़ुतिला किंतु वर्तमान जो पड़िबो एई एतिक याकू वर्तमान कोनोसी टिकस पड़िबो नाही अर्थात टिकस पड़िले भी से टिकस को जदि आमे हिसाब को नबा ताहले जीरो होबो केमिति मने करा जाऊ जदि 12 लाख टंका बा 13 लाख टंका जनकर माने आय रहिला वार्षिक आय तेनु तांकर 12 लाख गला परे आउ रहिबो केते लाख टंका तांकर आउ रहिबो लाख टंका तो एई लाख टंका ऊपर आपण कहिबे जे 15% दबाक पड़िबो नाही सेमिति हबो नाही एई लाख टंका पर्यंत ताहले तांकर केमिति हिसाब हबो ना तांको पई एई स्लैब गुडी को ही कार्यकारी हबो तांको पई 0 ରୁ 4 लाख कोनोसी पड़िबो नाही एवं 4 ରୁ 8 लाख से 5% हार रे अर्थात 4 ରୁ 8 लाख पर्यंत जो 4 लाख ऊपर 5% हार रे से देबे ताले केते होची 4 लाख रो 5% केते होची ना 20,000 पडुची से भाव में 8 ରୁ 12 लाख ये 4 लाख 10% हार रे से 4 लाख 10% हार रे केते देबे सेटा होची 40 लाख अर्थात तांको पाखरे 60,000 तांकर टैक्स एवं ए लक्षे ऊपर से देबे केते ना 15% एठी देबे 15,000 तेणु करी टोटाल रहिबो केते तांकर 75,000 रहिबो तांकर रहिबो टोटाल टैक्स केते रहिबो जहार 13 लाख रहिबो तांकर रहिबो 75,000 टंका तांको टैक्स दबाकू पड़िबो एया ही कहउची किंतु अन्य पक्षरे जहार 12 लाख टंका पर्यंत थिबो ताहाले ए जो 60,000 रहिछि ये 60,000 तांको कोन मिलिबो ना सेटा मिलिबो रिबेट बा रिहाती ए जो रिबेट मिलिबो ये 60,000 रिबेट मिलिबो
खाली सेतिकी नुहे 12,75,000 जदि होउची ताले 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलिबो तेणु करिकी 12,75,000 आम से बारंबार कहूँ जे 12,75,000 पर्यंत कौन टिकस देवाक पड़ोनी अन्य पक्षे 16 रु 20 लाख पर्यंत 20% एवं 20 रु 24 लाख पर्यंत 25% एवं 24 लाख रु अधिक जो मानकर इनकम अर्थात मासकू 2 लाख टंका रु अधिक जार इनकम से 30% हार में टिकस देवाक पड़ो तेणु मोटामोटी भाव में आम यह कहवा जे जो मानकर इनकम रही 12,75,000 से आफ्टर रिबेट कौन सी टैक्स देवाक पड़ो ना किंतु 12 लाख रु टंकाटी अधिक है जदि तांकर आय ताहले आम जदि कहवा से जो रिबेट जो सीमा रही ताठू ऊपर को जदि हटिला ताहले पूरा कैलकुलेशन आरंभ हम केबेठू ना यही जो 4 लाख रु 8 लाख 5% 8 लाख रु 12 लाख 10% ये प्रकार हिसाब पूरा पूरी करा जिवो अर्थात मोटामोटी भाव में मध्यवित्त परिवार को अधिक टंका अधिक अर्थ संचय लगी मिलिबो बा निवेश लगी मिलिबो खाली सेतिकी नुहे से जो संचय आ निवेश को खर्च करने फल बजार अभिवृद्धि घटिबो जार प्रभाव पूरा अर्थनीति उपर पड़िबो। बिल्कुल एक बृहत्तर लक्ष्य नहीं सरकार पदक्षेप नहीं दीर्घ समय धरी यही चर्चा होता टिकस स्लैब रे सरकार कौन परिवर्तन कर शेष में परिवर्तन आम देखिपे चार्टर्ड अकाउंटेंट सुधांशु रंजन प्रधान आम सहित रोचंती श्रीजुक्त प्रधान आपको स्वागत करुच्ची बजेट को केते मार्क देबे टिकस सरलीकरण बा टिकस रे परिवर्तन प्रक्रिया को आपण केमिति वर्णना करिवे एहारो लाभ साधारण बा मध्यवित्त परिवार केमिति पाइबे सरकार बा अर्थनीति को कोन बूस्ट करिवो। आज्ञा धन्यवाद विभू। हेलो मो कोंतु आज्ञा धन्यवाद प्रधान सुनी पारुछु आमे आपण कोंतु मो वर्तमान ए बजेट को मध्यवित्त परिवार ପାଇଁ गोटे बड़ रिलीफ बा बड़ आश्वस्ति बोली देखुची कारण जेमती आगुरु भी चर्चा हो चलता स्टूडियो रे भी आपण मानकर जे सब कहउतिले पोस्ट माने कहउतिले से माने ठीक भाव में प्रांजल भाव में लोकान को बुझाई सारतिले जे वर्तमान 12,75,000 पर्यंत स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी मिसेले 12,75,000 पर्यंत गोटे लोक को वर्तमान कौन सी इनकम टैक्स देवा को पड़ो ना। आज्ञा तो प्रधान निश्चित भाव में मध्यवित्त को ये गोटे बड़ खुशी आनी समस्त भावुले हूँ 10 लाख पर्यंत रिलैक्स मिल पारे किंतु एठी देखिबा कि आहुरी अधिक खुशी दिया जाइए 12 लाख टंका पर्यंत कौन सी इनकम टैक्स देवा पड़ो ना अर्थात मोर जो 1 लाख टंका दरमा होची मोर यदि वर्ष को 12 लाख मो कौन सी इनकम टैक्स देवा पड़ो ना ये गोटे टैक्स व्यवस्था को गोटे सरलीकरण करने एभली गोटे बड़ पदक्षेप और मध्यवित्त को खुश करने की जहाद्वारा आम रूराल इकोनोमी को केते दूर बूस्ट कर सुयुक्त प्रधान जानवा चाहबू कहीं ग्रामीण विकास देशर विकास आपण गोटे बहुत भल जिनस कहले जे टैक्स रो सरलीकरण दिगरे भी गोटे बड़ पदक्षेप प्लस यही जो मिडिल क्लास लोक मान भी संचय गोटे बड़ माध्यम भी एटा खोलिबो तो संचय हेले कोन हो ये जो पैसाटा संचय से ऑटोमेटिक किछि ना किछि किना बिका भल मंद इन्वेस्टमेंट सेविंग्स ए सब जिनस रे मनोनिवेश करिवे करिया द्वारा कोन मार्केट रे भी ग्रोथ आसीबो जहाँ द्वारा विभिन्न प्रकार जो चाहिदा आसुची से चाहिदार भी बढ़िबो से अनुसार प्रोडक्शन लिंक भी बढ़ी चलिबो। बिल्कुल एवं पुराना टिकस व्यवस्था उच्छेद न हेले मध्य वर्तमान नुआ स्लैब जहाँ आसीची बा 12,75,000 पर्यंत जने जदि टिकस छाड़ पाउचंती ताले लोक सेपट को ही मन बलैबे एवं आपे आपे पुराना व्यवस्था उठी जिबा पई जाउची निश्चित गोटे व्यवस्था जो चली थाए हठात कि उठे हम ना 140 कोटी लोकों भितर बर्तमान देखो 8 कोटी टैक्स पेयर तादर मात्र 3 कोटी लोक ही दौरान इनकम टैक्स तो जो मैंने इनकम टैक्स बर्तमान 3 कोटी लोक दौरान फाइनेंस मिनिस्टर कहले या द्वारा एडिशनल बर्डन सरकार 1,25,000 कोटी टंका पाखापाखि बर्डन रही से 1,25,000 कोटी टंकार बर्डनटा सरकार बोले जदि से पैसा निश्चित भाव ये मध्यवित्त परिवार मान आसला तो सही पैसा पुणी ऑटोमेटिक मार्केट भितर आइदर इन्वेस्टमेंट हो ना किना बिका हो यही सब माध्यम पुणी मार्केट रे फ्लो बा प्रोडक्टिविटी बढ़िला। बिल्कुल एवं मध्यवित्तों पर यह एक बड़ आवश्यकता थिला गोटे पटे आम देखुचे दरदाम वृद्धि मुद्रास्फीति ए सब भितरे बा गोटे प्रकार घरोई बजेट करने साधारण नागरिकों चिंताजनक स्थिति सृष्टि होता यार भितर जदि रोजगार 7 लाख रु 8 लाख बा 9 लाख अच्छी ताऊपर टिकस बोझ पड़ूला तेणु ए झंझट बा ए चिंतारू वर्तमान जनसाधारण दूर हेबे प्रायतः 12,75,000 पर्यंत जदि रोजगार अच्छी ताले कोनोसी
टिकस पैठ करने पड़ूना ए वर्ग भितर पाखापाखि केते प्रतिशत भारतीय आसी पारंती एवं सेमानंकर संचय परिमाण कौन हो पारे एवं क्यों क्यों आधार रे आमे कहि परिबा कि ए पदक्षेप अर्थनीति को बूस्ट करिवो आपण देखंतु सेइरो तारो आंसर ही फाइनेंस मिनिस्टर तक स्पीच रे देई सारछन ए जो आपनकर जो सेविंग हबो निम्न मध्यमित कहतु कि मध्यमित परिवार लोकंकर जो टिकस बाबद सेविंग हम तो सही सेविंग बाबद सरकार को 1,25,000 कोटी टंकार एडिशनल बर्डन दब तो ये नंबर ऑफ टैक्स पेयर तो सहजे जानवा कष्टकर हम किंतु से अमाउंट से स्पेसिफाई कर देछन जे प्राय हमको 1,25,000 कोटी टंकार एडिशनल बर्डन या जो नबाकू पड़िबो तामाने सेही पैसाटा एडिशनल बर्डनटा जेतरा सरकार नेले से पैसाटा लोकन पाखे रहला तो लोक विभिन्न दिगरे ताकू इन्वेस्टमेंट करिवे नहले विभिन्न माध्यम रे ताकू कौन करिवे मार्केट रे किनिबे कि कार सेविंग कला कि कार एलआईसी कला कि कार म्यूचुअल फंड कला कि कार फ्यूचर पे रखिला ए सब माध्यम रे करिया द्वारा बाजार रे निश्चित गोटे एनर्जी आसीबो आसिक्त प्रधान गोटे पटे लोकों भितर ये प्रश्न रोला दरदाम कमिलानी किंतु एभली देखा कि 12 लाख टंका पर्यंत देखा कि आयकर सीमा आयकर छाड़ करागला तो जिते एभली पदक्षेप निया द्वारा कहीपर आ भितर गोटे समानता आसबो बोली आ द्वारा गोटे बालांस आसबो बोली कहीं जो आयकर सीमा छाड़ करा आम अर्थनीति उपर गोटे बड़ प्रभाव पकाई थाए एवं इंडियन इकोनॉमी उपर भारत अर्थनीति उपर आर कौन प्रभाव पड़ो बोली आप भावुंट एवं किभली भाव में गोटे बालांस आसबा द्वारा देखो जो निम्न मध्यमित परिवार जदि किसी संचय होउची ताले तांकर द्वारा ताकर कोन हो एटा या गवर्नमेंट गोटे रिकॉग्नाइज कला दीर्घ दिन एटा गोटे आशा थिला जे गवर्नमेंट निम्न मध्यमित बा लोअर मिडिल क्लास लोक मानन पई किछि करूना बा तांको पई सेमति किछि आखि दृष्टिया स्टेप नउना जो माने किंतु मेजर रोल प्ले करथले इंडियन इकोनॉमी पई तो एटा गोटे टाइप रो रिकॉग्नाइजेशन टू द लोअर मिडिल क्लास नॉट ओनली माने आपनकर एटा केवल सेविंग हिसाब करंतु नै जे सरकार वर्तमान रियलाइज करले बा उद्योग कले जे ए मानकु भी एनकरेजमेंट करबा आवश्यकता रहउची जहा द्वारा कि हमर मार्केट रे ए मानकर नै कि हमें आगु को नै परिबा बा जो जीडीपी जोडा लक्ष्य रखि जंती ए मानकर ग्रोथ हेले ही बा ए मानकर जो ग्रोथ हेले ही हमें आगु चित्र पड़ि पाइ ओके श्रीजुक्त प्रधान साधारणतः भारतीय धारणा कि जो माने टिकस परिसर भुक्त बा टिकस पैठ करती से आर्थिक दृष्टिकोण यथेष्ट स्वच्छल वर्ग एवं पूर्वर आम देखीचे तार स्लाब जेहेतु कम थिला जो मानकर रोजगार हो तो किछिटा अधिक से माने चली आसुथिले किंतु वर्तमान आम देखा गोटे बड़ भाग बा गोटे बड़ अंश टिकस पैठ करेंगे नहीं तो सेमानंक पई कौन कहिबे सेमाने निजको कौन भाविबे बा लाइफ कॉस्ट ऑफ लिविंग वर्तमान बढ़ुची कि एभली स्थिति बा एभली किछि सूचना दउची कि स्लाब रे परिवर्तन करिबा नहीं सेटा को आपण विभाग ठीक कहले जे हमरो एटा जदी एनकरेजमेंट कराउची जे हमरो 12 लाख पर्यंत लोकंकर इनकम स्लैब छाडी देले तो इन्फ्लेशन इंडेक्स तो निश्चित दिन को दिन बढ़ी बढ़ी चली तादरे कोनोसी प्रकार कार माने द्विमत हबार कोनोसी क्वेश्चन उठुनी किंतु एई जिंसटा को हमें वर्तमान सुधा परिप्रेक्षी रे हमें पॉजिटिव रे नबा उचित जो आगामी दिन रे लोक मानक पाखरे टिके बंचत रहू बा सेविंग रहू सेमानकर सेमाने पर्सनल लाइकिंग रो जे आगामी दिन रे सिद्ध प्रधान लोकंक ऊपर कोन प्रभाव पड़िबो बोली आपण भाबुछंती लोकंकर निश्चित जो संचयटा अछि से संचयटा निश्चित वृद्धि पाइबो जदि मु टिकस 70,000 टका एक्स्ट्रा देतांदी 60,000 टका एक्स्ट्रा देतांदी से टिकस बाबद को से पैसा जदि मोर सेविंग हैला ताले मु आइदर ताको बैंक रे डिपोजिट रखली नहले ताको अन्य कोनोसी माध्यम रे मु एडिशनल इन्वेस्टमेंट करली तो या द्वारा ताको सेमानकर भी सोचल माने मानदंडटा भी सोचल हेई चली निश्चित भाव में लोकंर देखा कि अभिवृद्धि बढ़ बड़ कथा हूँ कि श्रीयुक्त प्रधान या द्वारा आम कहीपर कि अर्थनैतिक अभिवृद्धि बढ़ा सहित गोटे बड़ रिफर्म आसीपे कहीं सरकार जो फोकस रही लोकों हाथ में टंका रहू लोक मैंने खर्च करूँ तो जहाद्वारा गोटे आम कहीपर आम भारत अर्थनीति आहरी सुदृढ़ होगा कहुपर कि से दिगरे ही पदक्षेप नहीं जदिव एडिशनल बर्डन बढ़ुची किंतु से जिनटा को पावरटा को वर्तमान लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोक गवर्नमेंट ट्रांसफर करुच्छे तो या द्वारा निश्चित अर्थनैतिक अभिवृद्धि भी यही पदक्षेप गुड़ाक साहाय्य कर बिल्कुल केवल जे मध्यवित्तों उपरे दृष्टि रही इनकम टैक्स रो स्लैब को देखिले से कथा कुआ से कथा नुहे कारण आम देखुचे जो माने उच्च वेतन भोगी अच्छा रोजगार जो मानकर अधिकार रही से दृष्टि देइचंती वर्तमान नुआ स्लैब है 24 लाख रु अधिक 30% टिकस पैठ करेंगे तेणु से जो वर्ग आसुले 15 लाख पर जो मैंने 30% दौले वर्तमान से पाखापाखि 9 लाख 10 लाख छाड़ पाइबे गोटे सुविधा पाउचंती ताहा कौन सब प्रभाव पकई पारे एवं ए असमंजस्य को या दूर करिवो कि आज्ञा
ଆପଣ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ବିବାବୁ, କେବଳ ଲୋୟର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ বা ଅପର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ এই ସବୁର ଡେଫିନେସନ ଆଜି ଡେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଲାରିଟି ଆସିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅପ୍ ଟୁ 24 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ବା ଲୋୟର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ହିସାବରେ ହିଁ କନସିଡର କରୁଛେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 60,000 70,000 ଆଉ 80,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅପ୍ ଟୁ 12 ଲକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ, 12 ଲକ୍ଷରୁ 15 ଲକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ, 15 ଲକ୍ଷରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଲାବ୍ କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ସେଭିଂ ହେଉଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଭିଂର ବର୍ଡନଟା ହିଁ ଆମାଉଣ୍ଟିଂ ଟୁ 1,25,000 crores rupees। ତ ଏଇ ପଇସାଟା ହିଁ ସେମାନେ ଅନୁମାନିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁମାନିକ ଅଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆଡିସନାଲ ବର୍ଡନ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର ରିଲିଫ ବାବଦକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବିୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। निश्चित भाव में टे दर्शक मान से खबर टी पुणी देवाक चाहिए जहाँ समस्त गोटे अपेक्षा था 12 लाख टंका पर्यंत कौन से आप इनकम टैक्स देवेनि 12 लाख पर्यंत आयकर छाड़ कर बजेट रे बड़ घोषणा आयकर छाड़ सीमा 12 लाख टंका को वृद्धि कर केंद्र बजेट रे मध्यवित्त को खुश करने बड़ घोषणा करिसेंती निर्मला सीतारमन। आयकर छाड़ सीमा 12 लाख टंका को वृद्धि पाई से आयकर रिटर्न फाइल्स कर समय सीमा को 2 वर्ष रु 4 वर्ष को वृद्धि कर जहाद्वारा आम कहीपर आयकर सीमा बढ़िया द्वारा लोकों पाखे टंका लोकों पाखे अर्थ रही खर्च करें जहाद्वारा रूराल इकोनोमी को अधिक बूस्ट जहाद्वारा गोटे रिफॉर्म आसो बोली एक्सपर्ट मत याद्वारा अर्थनैतिक कार्यकलाप वृद्धि पाइबा द्वारा अभिवृद्धि त्वरान्वित हो 12 लाख टंका पर्यंत आप कौन टैक्स देवेनि सेहीपरि 12 रु 16 लाख पर्यंत आय 15% रहिबो 16 रु 20 लाख पर्यंत आय 20% रहिबो 20 रु 24 लाख पर्यंत आय आप 25% टैक्स देबे सेहीपरि 24 लाख रु अधिक जो मानकर इनकम से 30% अर्थात 30% टैक्स देवे बोली बड़ घोषणा कर बजेट रे आयकर को नहीं एक बड़ निष्पत्ति एवं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन कहते कि आसंता सप्ताह एक नूतन आयकर बिल आगत कर आयकर पर नुआ आईन प्रणयन कर दरकार एवं आयकर नियम में बड़ धरण परिवर्तन होगा टिकस स्लैब सहित जड़ित हेबनी किंतु बड़ कथा होची कि विभू जेतेबेले बड़ घोषणा कर मध्यवित्त को ये कह गोटे बड़ आश्वस्ति श्रीयुक्त प्रधान बड़ कथा होची कि जमती आम आलोचना करूँ कहला कि 10 लाख पर्यंत आयकर स्लैब छाड़ कर किंतु एठी सरकार देखिबा कि 12 लाख टंका पर्यंत आयकर स्लैब छाड़ करिसेंती जहाद्वारा आम कहीपर अर्थनैतिक कार्यकलाप तो वृद्धि पाइब अभिवृद्धि आहरी त्वरान्वित हेब एठी लोकंकर 80,000 टंका बंचिब वर्षको पर्यंत जो 80,000 पर्यंत टंका छाड़ 70,000 पर्यंत छाड़ 60,000 पर्यंत संचय हम यही सब पैसा गुड़ाक निश्चित रूपे जो जो लोक मान सब सीमा भितर पाखे गोटे ग्रेट रिलीफ हम तो रिलीफ हवा पर से आडिशनल सेविंग बढ़ला आडिशनल इन्वेस्टमेंट से अनुसार बढ़ी चलला तो यहाँ निश्चित गोटे इंडियन इकोनोमी सपोर्टिंग फैक्टर रही आगामी दिन गुड़ाक। बिल्कुल आम लगातार भाव में चार्टर्ड अकाउंटेंट सुधांशु प्रधान प्रतिक्रिया नौचे और ता सहित टिकस स्लैब बा नुआ कौन सब आसी परिवर्तन कौन सब होती आम आपण टीवी स्क्रीन में देखाऊे और जमी बड़ खबर रही कि 12 लाख जदि आपंकर रोजगार अच्छी वार्षिक ताहले आपन को कौन टिकस पैठ करने पड़ो ना यह बाद 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन सुविधा आप पाइपर अर्थात 12,75,000 पर्यंत जदि आपंकर वार्षिक रोजगार ताहले कौन प्रकार चिंता नहीं बा सरकार को कौन टिकस देवाई पड़ो ना एवं सरकार एभली एक बड़ पदक्षेप नेबा पछर अनेक कारण देखुंत विशेषज्ञ कारण वर्तमान समय दरदाम वृद्धि एवं जो माने निम्न मध्यवित्त थिले समक्रमे तांकर रोजगार बढ़ुची और स्वल्प रोजगार में लोके टिकस परिसर भुक्त होते जहाँ एक अतिरिक्त बोझ रही तेणु मध्यवित्त व निम्न मध्यवित्त जे माने अछंती टिकस परिसर भुक्त होते से केमिति अतिरिक्त बोझ उठिबो ताकु नै सरकार लक्ष्य रखिथिले एवं यार प्रतिफलन आम देखुचे बजेट रे कारण बजेट जेतेबेले उपस्थापन होइथिला समस्तंकर नजर रहिथिला इनकम टैक्स बा टिकस रे कौन सबू सरकार परिवर्तन करि पारंती लंबा समय धरी चर्चा होउथिला कि स्लैब रे परिवर्तन हेबार आवश्यकता रही वर्तमान समय मुद्रास्फीति दरदाम वृद्धि एवं लोकंक रोजगार ए सबू को अनुध्यान कले तमाम विशेषज्ञ मत रखुथिले कि निश्चय टिकस स्लैब रे परिवर्तन हेबो एवं आम पूर्व देखुथिले कि 7 लाख ता सहित स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 अर्थात 7,75,000 पर्यंत जो मानकर रोजगार थिला से माने टिकस देउ नथिले किंतु ता ऊपर जो मानकर रोजगार थिला से माने टिकस परिसर भुक्त होउथिले एवं एथिरे आमे प्रायतः 5 लाख टंका
अधिका देखुचे अर्थात 12,75,000 पर्यंत आपण को कोनोसी टिकस देबा पई पड़िबो नाही। ता सहित आउ एक बड़ परिवर्तन आसीची 15 लाख ऊपर रोजगार थिले 30% देबा पई पड़ुथिला एथिरे मध्ये वृद्धि करिसंती सरकार एवं 24 लाख रु जदि आपनकर रोजगार अधिक हुए ताहेले 30% टिकस देबा पई पड़िबो। तो बजेट रे आउ 10टी बड़ कथा जेतेबेले संसद रे आसीबो नुआ आयकर बिल जहाँ जे अर्थमंत्री कहते कैंसर पीड़ितों पर 200 डे केयर सेंटर घोषणा कर सबू जिले में कैंसर हॉस्पिटल एवं बड़ घोषणा कर प्रति जिले में दुरारोग्य औषधर 100 जिले में पीएम धन धान्य कृषि योजना बड़ घोषणा कर किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट 3 लाख को बढ़ला। आप जानती अष्टम थर बजेट उपस्थापन कर अर्थमंत्री कृषक महिला युवगोष्ठी को गुरुत्व देवा सहित आम देखिलु शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था को अधिक फोकस कर तो यार भीतर देशर प्राथमिक स्तर स्वास्थ्य शिक्षा पर अधिक फोकस करिसेंती मोदी सरकार। तो जहाँ द्वारा कि लोक माने केमती उपकृत होई परिबे एथर देखिबा कि 1.75 कोटी कृषक लाभवान हेबे। कृषक मानक पई बड़ खबर जेतेबेले परिबा फल उत्पादन उपर फोकस कर जाईची गुरुत्व दिया जाईची एवं कृषक मानक इनकम केमती बढ़िबो डाली जातीय शस्य उत्पादन पई 6 वर्षीय योजना मध्ये घोषणा करा जाईची कपा उत्पादन पई 5 वर्षीय योजना मध्ये घोषणा करा जाईची जेतेबेले कृषक मानक आय वृद्धि केमती करा जिवो सेमानको अधिक सशक्त केमती करा जिवो जोथि पई सरकारकर फोकस रहिछि एवं यार भितर आमे देखिलु बजेट रे 10टी क्षेत्र को गुरुत्व दिया जाईछि विशेष करके आमे देखिलु प्रधानमंत्री कृषि धन योजना को प्राथमिकता दिया जाईछि एथि सहित आत्मनिर्भर सेमानको केमती करा जिवो ताहा पर फोकस करा जाईछि परिबा फल उत्पादन वृद्धि उपरे गुरुत्व दिया जाईछि एवं एक एई बजेट एक विकसित भारतर बजेट बोली मध्ये अर्थमंत्री कहिसंती आम अर्थनीति द्रुत गति रे जेतु वृद्धि पाउछि एई बजेट गरीब युवक कृषक महिलांकर बजेट ए बजेट भारतर अर्थनीति को शक्ति देव ए बजेट अर्थनीति को गति देव बोली मध्ये कहिसंती मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन मिलबो 6टी क्षेत्र रे द्रुत विकास हेबो केवल सेतिकी नुहे 100 जिल्ला रे पीएम धन धान्य कृषि योजना मध्ये करा जिवो एथिरे 1.75 कोटी कृषक लाभवान हेबे बोली मध्ये अर्थमंत्री कहिसंती एवं ता सहित खेलना उत्पादन क्षेत्र रे भारत को एक विश्व स्तरीय केंद्र रे परिणत करिबु बोली मध्ये सीतारमन कहिसंती यह एक योजना आरंभ करा जिवो ए संपर्कित इकोसिस्टम रो विकास उपरे फोकस करा जिवो जहाँ द्वारा उच्च मानर परिवेश अनुकूल खेलना मध्ये उत्पादन हेबो सेहिपरि उद्योगी को प्रोत्साहित करबा पई कार्यक्रम मध्ये हाथ को निया जिवो किसान क्रेडिट कार्ड रो अवधि बढ़िछि जहाँ द्वारा कि समस्त उपकृत हेबे जहाँ बजेट रे बड़ घोषणा करिसंती सीतारमन। बिल्कुल प्रतिटी दिग एवं प्रतिटी क्षेत्र उपरे फोकस रही सरकार एवं प्रतिटी दिग उपरे व्यवहार आम देखुचे लगातार भाव में वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट सुधांशु रंजन प्रधान आम सहित अच्छा श्रीजुक्त प्रधान आम तो इनकम टैक्स संपर्क में आलोचना करुले बाद अनेक एमती क्षेत्र अच्छी जो सब क्षेत्र उपर सरकार फोकस कर आवश्यकता थिला से सब क्षेत्र दिगरे व्यवहार बा सरकार अनुदान को आप केमिति देखुचंती। देखो ये जो व्यवहार सरकार करिसंती 10टा प्रायोरिटी सेक्टर जमती आपण कहिबे शिक्षा स्वास्थ्य कृषि डिफेन्स माने हमर जो डिफेन्स रो बिल ए सब जिनिस रे सरकार ताकर माने बजेट को आकार बढ़ाई चलछन बढ़ाइबार कारण होची वर्तमान आवश्यकता जो जो प्रायोरिटी सेक्टर गुडाकर अछि से सब सेक्टर गुडाकर जदि आमे ताको एडिशनल फंड किछि करदबा ताले से सब बजेट गुडाकर सेहि सब सेक्टर को हमर जीडीपी ग्रोथ रे से माने हमको सहायकारी करिवेनी कृषि गोटे मेजर जिनस हमर जीडीपी ग्रोथ पाई सर्विस सेक्टर हो तो यही सब जिनस रे बारंबार गवर्नमेंट कर अनुदान बजेट रे बढ़ी चली या द्वारा कोन हो एटा आगामी दिन रे माने निश्चित विकसित भारत रो जो स्वप्न देखा जाउची प्रधानमंत्री मोदी को आरंभ करी हमर जो सब बड़ बड़ नेता माने कहि चलछन जे 2046 सुधा भारत गोटे उन्नत अर्थनीति रे परिणत हो तो एमानकर ग्रोथ फैक्टर जेमति हमको कहउची जे मिनिमम 8% रहिले आमे 2046 सुधा गोटे डेवलप कंट्री हे परिबा तो 8% जीडीपी ग्रोथ केमिति आसीबो जदि हमको एही सब जगह रे प्रायोरिटी सेक्टर गुडा करे एडिशनल इन्वेस्टमेंट न करबा ताले से सब क्षेत्र अनुदान जीडीपी ग्रोथ रे रहिबो नाही बा दिनकु दिन कमी कमी चलिबो जहाँ द्वारा कि जीडीपी कौन हम यही सब जिनस अनुमानिक नहीं जदि ग्रोथ रेट रहिबो ताले 2046 सुधा भारत गोटे विकसित राष्ट्र रूपे विश्व में परिगणित हो। बिल्कुल एवं बजेट रे साधारणतः शिक्षा स्वास्थ्य बा एक ए सब क्षेत्र उपर सर्वदा सरकार फोकस रही थाए कौन नुआ कथा नुहे और चलित थर बजेट रे तार प्रतिफलन देखुचे किंतु वर्तमान समय जनसाधारण पाखरे सबुठु चर्चार विषय पलटि दरदाम वृद्धि मुद्रास्फीति जहाँ लोक बाधुला और अनेक चर्चा होउथिला तेणु बजेट रे उत्पादन वृद्धि कथा कहतु बा मुद्रास्फीति को ह्रास करने कथा कहतु बा दरदाम केमिति नियंत्रण हो पारिबो से दिगरे कौन सब पदक्षेप निया जाइथिबा भली आपण मने करूचंती।
दरदाम कंट्रोल करने जो सब पदक्षेप धरनी आमर केमी टिकस जमी आम गोटे सका बारंबार आम डिस्कसन कर क्षेत्र में आम लोकों पाखे पैसा पहुंचे पार जदि डायरेक्टली किसी गोटे स्कीम कर और इनडायरेक्टली लोक मानकर इनकम आधार टाक बढ़ेगा आम आइदर कौन करवा किसी स्कीम इनफ्लेशन इंडेक्स टाक कंट्रोल रखा और जो माने लोक माने सब निम्न मध्यबित्त हूँ कि मध्यबित्त हूँ से केमती माने संचयटा बढ़ी पार ये दुईटाक जिन को प्रायोरिटी रखिक सरकार विभिन्न प्रकार घोषणा भी कौन कर इनकम टैक्स स्लैब रे गोटे बढ़ेले आमर जमी कहले आमर विभिन्न प्रकार एग्रीकल्चरल सब्सिडी बढ़ेले आमर जमी कोल्ड स्टोरेज प्रोत्साहन दौरान स्वास्थ्य केस में विभिन्न प्रकार डाक्तरी पाठ आरंभ कर विभिन्न प्रकार जो रोग वैराग ये सब जिन मेडिसिन कॉस्टली मेडिसिन गुड़ा सब सब्सिडी गुड़ाक बढ़ेदेले तो ये सब जिन द्वारा से सब फैक्टर गुड़ा नहीं गवर्नमेंट बर्तमान जो इनफ्लेक्शन आज डेट रे आस्ते आस्ते बढ़ी बढ़ी चली कंट्रोल करने चेष्टा कर श्रीयुक्त प्रधान आम देखिलु समस्त विकास मध्यवित्त क्षमता वृद्धि करने को बजेट एकदम देखा कि समर्पित युव चाषी ग्रामीण महिला छोट छोट चाषी बजेट रे एथर फोकस करा सहित प्रधानमंत्री धनधान्य योजना को राज्य सरकार सहित मिसी केंद्र सरकार चलाइबे आमे कहि परिबा बजेट ही विकास को गोटे नुआ दिग देबो बोली निश्चित रूपे यही बजेटा जमी प्रधानमंत्री आगु कहते जे एटा गोटे साधारण बजेट रहिबो साधारण लोकों पई गोटे बजेट रहिबो सेही अनुसार ही बजेटा प्रिपेयर कराइछि बोली मोर निजस्व मतामत कारण जहाँ को केस रे जो माने सब लोअर मिडिल क्लास लोक जो माने इन्फ्लेशन इंडेक्स द्वारा बेसी अफेक्ट करूथिले ताको पाखरे केमिति किछि पैसा बंचिबो ताकर केमिति संचय केमिति वृद्धि होबो आ सेमाने केमिति उपयुक्त भाबरे जो सब इन्फ्लेशन बढ़ी चली ताकू सेही अनुसार केमिति खर्च कर परिबे ताकर निज चाहिदा मुताबिक खर्च कर परिबे सेही जिंस ऊपर निश्चित गुरुत्व आरोप कराइछि बिल्कुल बजेट विभिन्न हेडलाइंस आम टीवी स्क्रीन रे दर्शकों को देखु एवं बजेट रे कौन सब प्रावधान रही घोषणा कौन सब होती तार आम पूरा टिकिनिकी तथ्य देवाई चेष्टा करुचु ता सहित विशेषज्ञ परामर्श आपण मान निकट में पहुंचाइबू बजेट रे सब व्यवस्था वास्तव में भारतर अर्थनीति को किभली भाव में आग को नेब सरकार विजन कौन कौन सब प्रतिफलन होची सरकार फोकस एरिया कौन रही ए तमाम दिगरे आम विस्तृत भाव में आलोचना करबा किंतु ता पूर्व समस्त नजर में रही कि टिकस रे कौन सब परिवर्तन करा जाउची एवं टिकस स्लैब रे सरकार आनिछंती एक बड़ परिवर्तन कारण पूर्व टिकस पैठ करुले जो मानकर रोजगार थिला 7 लाख और स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 मिसिले 7,75,000 टंका पर्यंत कौन टिकस देवाई पड़ू नाला किंतु एथिरे एक बड़ परिवर्तन करा जाइछि 12 लाख टिकस रोजगार पर्यंत छाड़ या बाद 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन जदि जनकर रोजगार वार्षिक 12,75,000 पर्यंत भी रोचे ताहले से कौन टिकस पैठ करेंगे ना एवं विशेषज्ञ यहाँ स्वागत करुँच सहित यार लाभ केमिति मिलिबो से कथा बुझाउछंती कारण जो लोक मैंने टिकस पैठ करुले से निश्चय चिंतित थिले किंतु वर्तमान 12,75,000 पर्यंत जार रोजगार एवं से जदि टिकस पैठ न करुँच से निश्चय खुशी हेबे एवं जो पैसा टिकस पैठ करते हे तो से टंका से खर्च करेंगे तेणु बजार को आसीबो एवं बजार को अर्थव्यवस्था आउरी सुदृढ़ करिबो तेणु ए गोटे सरकार हे तो परोक्ष हो पारे किंतु गोटे बलिष्ठ पदक्षेप जहाँ भारतर अर्थव्यवस्था को आहुरी आगक